So welcome in this dermatology DFX. I hope everybody have got their workbooks. So we have total 3 to 4 hours in which we have to complete the revision of whole dermatology. हमें 3 से 4 घंटे में पूरा डर्मा खत्म करना है, ठीक है ना? अब हमने ये PDF जो बना के आपको दिया है, हटाओ आप, हेलो, अभी आवाज आ रहा है सबको? हाँ, तो ये जो PDF है इसमें अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 5 इयर्स के MCQ अटैच करें, ठीक है? वी हैव अटैच्ड 5 इयर्स ऑफ MCQ एट द एंड। अब मैंने इस PDF को ऐसे बनाया है कि कुछ टॉपिक्स हमने सिर्फ MCQ में कवर करें और कुछ टॉपिक्स हम थ्रू इमेजेस कवर करेंगे, बट वी विल मेक श्योर, हम ये पूरा श्योर करके चलेंगे कि डर्मेटोलॉजी को रिवाइज करना है, ठीक है? स्टार्ट करें, सब लोग रेडी है? थोड़ा जोर से, यस, वेरी नाइस। नाउ फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक से। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज एक्ने एंड इट्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमें पास आएंगे, ठीक है? प्लीज डोंट टॉक, वी आर स्टार्टिंग द क्लास, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। स्टार्टिंग विथ एक्ने वल्गैरिस। नाउ फ्यू क्वेश्चंस विच यू ऑलरेडी गॉट। आपको जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो एक्ने वल्गैरिस इज अ डिजीज ऑफ विच ग्लैंड? It is a disease of sebaceous gland, but actually it is a disease of pilosebaceous unit. Now please listen, सब लोग सुनेंगे। हमारे स्किन में, हमारे अगर हम नॉर्मल स्किन की बात करें तो 3 लेयर्स होती हैं। व्हाट आर द 3 लेयर्स इन आवर स्किन? भाई ये तो पहली चीज होती है ना डर्मा की, 3 लेयर्स। व्हाट आर द 3 लेयर्स? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। Epidermis is made up of keratinocytes. It is a cellular layer. Dermis, it is made up of collagen fibers and elastic fibers. And hypodermis is made up of, what are these circles? ये balls क्या बना रखी है? These are fat cells, adipocytes. So these are the 3 layers. Now please remember my students, in our dermis we have few more structures. One is hair follicle. आपकी स्किन का एक इन्वेजिनेशन होता है, एंड इन दिस इन्वेजिनेशन यू हैव अ हेयर लाइक दिस. So this is hair follicle with hair. Then we have some glands. One of them is sebaceous gland. अब आप देख रहे हैं sebaceous gland कहाँ ओपन हो रहा है? Hair follicle में. There is one more gland like this which is opening directly onto the surface of skin. एक और gland है जो डायरेक्ट चमड़ी की सतह पे खुलता है। ये कौन सा ग्लैंड है? दिस इज इक्राइन स्वेट ग्लैंड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इक्राइन स्वेट ग्लैंड? क्या काम करता है ये ग्लैंड? वेरी नाइस, इट मेंटेन्स द कोर बॉडी टेम्परेचर। अगर यहाँ के एसी बंद कर दें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको गर्मी लगेगी। एंड व्हाट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स? यू स्टार्ट स्वेटिंग। व्हेन देयर इज स्वेटिंग आपका बॉडी कूल डाउन होता है, एंड दिस ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर विच इज राइजिंग। सो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, एंड दैट इज थ्रू आवर इक्राइन स्वेट ग्लैंड। इक्राइन ग्लैंड आप देख सकते हैं, इट इज ओपनिंग डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, तभी तो पसीना डायरेक्टली हमारी स्किन पे आता है। बट व्हाट अबाउट सेबेशियस ग्लैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, सेबेशियस ग्लैंड इट डेवलप्स ओनली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी। सेबेशियस ग्लैंड प्यूबर्टी के बाद ही बनना शुरू होता है या काम करना शुरू होता है। Why? ऐसा क्या हो जाता है प्यूबर्टी पे? We have circulating androgens, and please remember sebaceous gland is a androgen dependent gland. So once you have androgens which is at the time of puberty, भाई एंड्रोजन प्यूबर्टी पे बनेगा, जैसे ही एंड्रोजन आया sebaceous gland स्टिमुलेट हुआ और sebaceous gland क्या करेगा? सीबम बनाना शुरू कर देगा। अब सीबम बन तो गया, जाएगा कहाँ? सेबेशियस डक्ट से वो आ जाएगा हमारे हेयर फॉलिकल में, और हेयर फॉलिकल से वो आएगा हमारी स्किन की सरफेस पे। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। एंड अगर आप सब लोगों ने नोटिस करा हो कि आफ्टर प्यूबर्टी यू टेंड टू डेवलप एक ऑयली फिल्म आपके चेहरे पे बनने लगती है। इवन इफ यू वाइप इट आफ्टर सम टाइम दैट लेयर कम्स अगेन, वो लेयर वापस आती है। दैट इज द सीबम विच इज कंटिन्यूसली बीइंग ड्रेन्ड थ्रू योर सेबेशियस ग्लैंड into the hair follicle and from hair follicle to the surface of skin. समझ में आया? So sebaceous gland का ये नॉर्मल प्रोसेस है। बट कुछ लोगों में फॉलिक्यूलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है।
फॉलिक्यूलर आउटफ्लो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो दूसरी चीज क्या होगी, सीबम बाहर नहीं जा पाएगा, सीबम विल एक्यूमुलेट इन दी हेयर फॉलिकल, सीबम एक्यूमुलेट्स इन दी हेयर फॉलिकल, दैट इज द नेक्स्ट रिस्पॉन्स। एंड व्हेन देयर इज सीबम, अगर सीबम होगा तो थोड़ा सा बल्ज नजर आएगा आपको, देयर विल बी अ लिटिल बल्ज एट हेयर फॉलिकल, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कोमेडोन। When there is obstruction to the follicular outflow, obstruction to hair follicle, obstruction to the hair follicle, आप क्या देखोगे, you will see a comedone. सेकेंड चीज क्या होती है, आपके हेयर फॉलिकल के अंदर ऑलरेडी एक बैक्टीरिया रह रहा है, यू ऑलरेडी हैव वन बैक्टीरिया इन योर हेयर फॉलिकल, एंड कैन यू नेम इट, प्रोपियोने बैक्टीरियम एक्ने, उसके लिए तो मजा मजा हो गया, so many things, very suitable environment. So what will happen, P acne will proliferate now. So second thing will be proliferation of P acne. And जब P acne proliferate करेगा, क्या चीज होगी नेक्स्ट, थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ गया, and there will be a little more bulge, it will form a papule, you will see a papule. अगर आपकी बॉडी में कहीं भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया आने लगता है या बढ़ने लगता है, सो हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड, बाय सेंडिंग दी इन्फ्लामेटरी सेल्स। अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा आतंकवादी घुस जाए तो देश कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आर्मी बढ़ाएगा, पुलिस बढ़ाएगा, सेम थिंग अवर बॉडी हैज मोर पैथोजेंस, द बॉडी विल सेंड इन्फ्लामेटरी सेल्स, सो इन्फ्लामेटरी सेल विल कलेक्ट इन द हेयर फॉलिकल, एंड आपको सबको पता है कलेक्शन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल को हम क्या बोलते हैं, पस, एंड स्किन में हम इसको बोलते हैं पस्ट्यूल। सो नेक्स्ट थिंग इज यू हैव रिक्रूटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल, recruitment of inflammatory cell, this is pustule. So you can see these blue dots these are pus cells, and these blue dots, it will cause or it will give you an appearance like a pus filled space. Now next thing will what, next thing is इतना सारा चीजें आपके हेयर फॉलिकल में आ गया, सीबम भी आ गया, पी एक्ने भी आ गया, you have inflammatory cells, your hair follicle will stretch, 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 and there will be a time when you will see that hair follicle ruptures. There is rupture of hair follicle. This is known as nodulocystic acne. Understood? So these are the 4 different types of acne or 4 different grades of acne. Grade 1 is comedone, papule, pustule, and then nodulocystic type of acne. So actually we started with page number 3. So you can just come to the next page by chance with the sebaceous gland. So just next page you can see the grades of acne. Clear? So you can see that there are 4 images. Can I change this slide? मैं बदल दूं? ठीक है? देखो अब आप, you can see this image. This is your comedone. कोमेडोन 2 तरीके का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन कोमेडोन को हम बोलते हैं ब्लैक हेड और क्लोज्ड कोमेडोन को बोलते हैं हम व्हाइट हेड। ब्लैक हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कोमेडोन ओपन होता है एयर एंटर हो जाती है हेयर फॉलिकल के अंदर और वो आपके सीबम को ऑक्सीडाइज कर देती है, एंड दिस टर्न योर सीबम इनटू अ ब्लैक कलर क्रस्ट, दैट इज अ ओपन कोमेडोन। सो ग्रेड 1 इज योर कोमेडोन। प्लीज रिमेंबर, ये अगर किसी पेशेंट को कोमेडोन है, दिस इज द पैथोगनोमिक फीचर ऑफ एक्ने वल्गैरिस। इफ कोमेडोन्स आर नॉट देयर, यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग अदर देन एक्ने। कोमेडोन होना मस्ट है किसी को एक्ने बोलने के लिए, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, बट देयर शुड बी कोमेडोन्स बिकॉज इट इज पैथोगनोमिक। Grade 2 is when you have papules. You can see this is a papule. Grade 3 is a pustule. And grade 4 is nodule or cyst. This is nodule and cyst.
This is your nodule and cyst. Clear? Now इस point से दो question आपके पास already आ चुके, दो बार questions आ चुके. The question was, you can write with a different paper somewhere here only. भैया गर्म पानी है, hot water. Treatment of choice for grade 1 acne, what it can be? Please remember, treatment of choice for grade 1 acne is topical retinoids. इससे बहुत बार question आ चुका है. Topical retinoid is the treatment of choice for grade 1 acne. What is topical retinoid? It is a keratolytic drug. And what are the topical retinoids? Remember, tretin and tretinoin and adapalene. So ये important question है. Tretinoin and adapalene, these are two topical retinoids. These are two topical retinoids. It is treatment of choice for grade 1 acne. Very important. FMG में 2 से 3 बार question already आ चुका है. एक और question जो इसी slide से आया था, treatment of choice for grade 4 acne. And please remember, it is oral retinoid, which is isotretinoin. Isotretinoin. This was another question from the same topic. Another question from the same topic. एक्ने के ट्रीटमेंट से ये दो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी आ चुके. तीसरा पॉइंट जो इससे पूछा जाता है, दैट इज साइड इफेक्ट्स ऑफ आइसोट्रेटिनोइन. सो आपके रीसेंट एग्जाम में, एफएमजी के रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चन था, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ 13 सिस रेटिनोइक एसिड. व्हाट इज दिस 13 सिस रेटिनोइक एसिड? Please remember, it is the chemical structure of isotretinoin. It is the chemical structure of isotretinoin. It is nothing else. It is the isotretinoin only. And what are the side effects? What are the side effects? Dryness. You get dryness of lips. आपको lips में dryness या skin में dryness लगने लगती है. Liver function test को ये alter करता है. So if already a patient is with compromised liver, like एक alcoholic patient है जिसका liver compromised है, you will not give isotretinoin. It increases the triglyceride levels. So if a patient is already on hyperlipidemic drugs, आप नहीं दोगे उसको isotretinoin. Next is, it causes pseudotumor cerebri, space occupying lesion in the brain. It causes dish, diffuse, idiopathic, skeleton hyperostosis. And another and an important one, it is a teratogenic drug. Teratogenicity. It is a teratogenic drug. We never give isotretinoin in a patient or in a female who is either pregnant or who is thinking of getting pregnant. कोई लेडी अगर, कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट होना चाहती है या प्रेग्नेंट है, आप आइसोट्रेटिनोइन नहीं दोगे. नाउ समटाइम्स दे गिव यू अ क्वेश्चन, वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे कि एक पेशेंट है जो ऑलरेडी आइसोट्रेटिनोइन पर है एंड दिस फीमेल वो चाहती है कि वो अब प्रेग्नेंट हो. सो व्हाट विल बी योर अप्रोच? फर्स्ट इज ऑब्वियसली यू विल स्टॉप आइसोट्रेटिनोइन, बट सेकंड इज यू विल आस्क द पेशेंट कि फॉर नेक्स्ट 1 to 3 month शी शुड नॉट गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि आइसोट्रेटिनोइन आपके ब्लड में 1 to 3 months के लिए रहती है. So you have to ask that female, she can get pregnant but only after 2 to 3 months or 1 to 3 months. Okay? So you have to keep a strict contraception of 1 to 3 months after stopping the drug. So that can be asked. You can write one more side effect, that it is a photosensitive drug. It is given in the night only because it causes sensitivity. Photosensitivity.
So these are some of the side effect of isotretinoin. Side effect of isotretinoin. Clear है? Done. So you will get questions from acne from these topics. Now page number 1 which we accidentally left. So about hair disorders. Now questions कैसे आते हैं आपको? एक तो question देगा वो classification of hair disorders में या alopecia में. So please make a table. Alopecia which means hair loss. ये दो तरीके का मिलता है आपको. Non scarring and scarring. Obviously as the name suggests non scarring मतलब scar नहीं होता and scarring मतलब scar होता है. Non scarring को हम लोग non cicatricial भी बोलते हैं. Cicatricial. एंड स्कारिंग को हम लोग सिकेट्रिशियल भी बोलते हैं. The examples under non-scarring, 3 A's and 3 T's. Androgenic alopecia, anagen effluvium, and alopecia areata. Three T's, telogen effluvium, trichotillomania, and fungal infection, tinea capitis, which is non-inflammatory variety. It is non-inflammatory variety. Examples under cicatricial, lichen planus. When it occurs on scalp, अगर बालों में lichen planus होगा, you can see associated scarring alopecia. Discoid lupus erythematosus, DLE का plaque हो जाए. If you have a plaque of DLE on scalp, that plaque will have associated scarring alopecia. Frontal fibrosing alopecia. देखो ये क्वेश्चन नीट में 2 बार आ चुका है और अगर नीट में आ चुका है तो एनबी वाले इधर भी डाल सकते हैं. ठीक है. सो फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया ये एक एग्जांपल है स्कारिंग एलोपेशिया का. देन यू हैव टीनिया कैपाइटिस, इन्फ्लेमेटरी वैरायटी. एंड देयर आर सम इडियोपैथिक वैरायटीज व्हिच इज नोन एज स्यूडोपेलार्ड. कुछ इडियोपैथिक वैरायटीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपेलार्क ऑफ ब्रूक. Pseudopellared of Brook. बहुत important है table, you can get a question. टीलोजन एफ्लूवियम, एनाजन एफ्लूवियम क्या होता है? टीलोजन एफ्लूवियम जब कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो और उसके 3 से 4 महीने बाद हेयर फॉल होने लग जाए, टीलोजन एफ्लूवियम. कैंसर की दवाई ली किसी ने एंड उसको हेयर फॉल हो गया, एनाजन एफ्लूवियम. व्हाट इज एंड्रोजेनिक एलोपेशिया? बिकॉज ऑफ 5 alpha reductase, the testosterone is getting converted to dihydroxytestosterone, hair loss हो गया. Remember all these things. Now hair disorders में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एलोपेशिया एरिएटा से. आपके एफएमजी में there was a question I think 2 to 3 years back, just an image was given somewhat like this which is there in your workbook. Can I change? So you can see your workbook, page number 1, you can see a patient with patchy hair loss. It is not diffuse, it is patchy, coin shaped. This is very classical of alopecia areata. और अगर आप अंडरलाइन स्किन ऑब्जर्व करोगे, स्किन एकदम स्मूथ होती है, कोई रेडनेस नहीं, कोई इचिंग नहीं, कोई स्केलिंग नहीं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फीचर टीनिया कैपाइटिस को और एलोपेशिया एरिएटा को डिफरेंशिएट करने के लिए.
एलोपेशिया एरेटा में स्किन स्मूथ होती है, टीनिया में आपको रेडनेस दिखेगी, स्केलिंग दिखेगी, इचिंग दिखेगी, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन हियर एलोपेशिया एरिएटा, you have patchy hair loss, कैरेक्टरिस्टिक हेयर साइन क्या होता है? You have tapering of the hair which is known as exclamatory hair. बाल टेपर होने लगते हैं नीचे की तरफ. इनिशियली हेयर्स आर लाइक दिस एंड देयर इज लॉट ऑफ लिम्फोसाइट्स इन दीज पेशेंट्स और उसकी वजह से बाल टेपर होने लग जाता है. सो ये टेपरिंग को बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी हेयर साइन. अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्वार्म ऑफ बी अपीयरेंस. और क्या होता है स्वार्म ऑफ बी अपीयरेंस? कलेक्शन ऑफ T lymphocyte around hair bulb. Collection of T lymphocyte around hair bulb is a feature of alopecia areata. इसी के नीचे एक एक लाइन लिख लीजिए. एनाजन इफ्लूवियम ड्यू टू कैंसर कीमोथेरेपी. टीलोजन इफ्लूवियम stressful event and hair fall after 3 months. In anagen effluvium, immediate hair fall, but in telogen effluvium, there is a lag period. It is not immediate hair loss. So this is about the hair and its disorder. Any confusion, anything which you are not able to understand? Anagen effluvium is due to cancer chemotherapy and telogen effluvium stressful event. For example, typhoid, malaria, COVID infection. For example, exam, delivery. कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट होगा और उसके बाद आपका हेयर फॉल होने लगेगा. इसको हम बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम. और एनाजन एफ्लूवियम जो होता है वो होता है स्ट्रेट अवे आफ्टर टेकिंग अ कैंसर ड्रग. क्लियर? अब आप आ जाओ पेज नंबर 4 पे. कुछ डेफिनेशंस आपको पूछी जाती है एग्जाम में. फर्स्ट इज पैप्यूल. व्हाट इज अ पैप्यूल? सॉलिड रेज्ड लीजन of less than 1 centimeter, and a plaque is horizontally elevated lesion horizontally elevated lesions which are more than 1 centimeter. Yes, anagen effluvium is a reversible type of hair loss. Even telogen effluvium is a reversible type. As soon as you stop taking cancer drugs, after some time the hair will again develop. नहीं, see, you remember hair cycle? हेयर साइकिल में कितने फेजेस थे? एनाजन फेज, कैटाजन एंड टीलोजन. Imagine a patient has taken a cancer drug right now. Patient is taking cancer drug, the anagen hairs are breaking. Now after 2 months कैंसर ड्रग लेना बंद कर दिया. तो अब जो नया हेयर फॉलिकल जितना टाइम लेगा ग्रो करने में, दैट विल बी द लैग पीरियड.
ठीक है ना, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम कि भाई 4 महीने बाद बाल आएंगे या 2 महीने बाद, नहीं। सो आपको वो साइकिल पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल ऑब्जर्व कि आपको बाल आ रहा है। ठीक है, बट प्लीज रिमेंबर, जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, वेदर इट इज एनाजन एफ्लूवियम, टीलोजन एफ्लूवियम, दे आर ऑल रिवर्सिबल। जैसे ही आपका स्ट्रेसफुल इवेंट खत्म होता है या कैंसर दवाई लेना बंद करते हो, हेयर ग्रोथ वापस से आ जाती है। ठीक है, नाउ आपको आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टाइप ऑफ स्केल्स पे, और उसके लिए हमने कुछ इमेजेस लगा रखे हैं। कैन यू सी दिस? नेक्स्ट पेज, द डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स, प्लीज राइट डाउन। सिल्वरी माइकेशियस स्केल, किसका फीचर है ये? सोराइसिस। देन कोलरेट स्केल, also collar like scale, it is a feature of pityriasis rosea. Fish like scale, ichthyosis. Then dirty greasy scale, seborrheic dermatitis. Seborrheic dermatitis. And lastly, mica like scale. Mica like scale, it is a feature of pityriasis lichenoides chronica. There's one more scale, I'm writing it here, Brani scale. And this is a feature of pityriasis versicolor. It's a feature of pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor. So these are the examples. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, or they can give you a question key, which of the following is correct. So scales, different type of scales: silvery scales, collarette scale, fish like scale, mica like scale, dirty greasy scale. Clear? Any confusion? Clear? Now coming to a very important disease, psoriasis. Psoriasis से image based question already आ चुका है. You can get a question from clinical features of psoriasis, from nail features of psoriasis, and from the histopathology. ठीक है? So सबसे पहले clinical features of psoriasis. बता सकते हैं क्या होता है clinical presentation psoriasis के patients का? The clinical cutaneous feature क्या होता है? You have red color, well defined plaques with thick scale which are present on the extensors. So you can see the next page or here. What is psoriasis? Psoriasis का description लिखो. We have well defined erythematous or red papule and plaque. They are present on extensors. प्लीज रिमेंबर दिस क्लिनिकल इमेज. क्लिनिकल इमेज बहुत जरूरी है. आप देख सकते हैं, दिस इज नी, एल्बो, लोअर बैक, scalp, and even palm and soles. Psoriasis clinical image based question is important. It is a disease of extensors.
It's a disease of extensors. Done. अब नेक्स्ट चीज आप देखिए, प्लीज राइट डाउन, नेल चेंजेस मिलते हैं 50% ऑफ सोराइसिस पेशेंट्स में, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेल चेंजेस, नेल मैट्रिक्स की वजह से होने वाले एंड बिकॉज ऑफ नेल बेड. What are the changes due to nail matrix damage? Nail pitting. It is irregular deep pit which you see. Second is leukonychia, whitish discoloration of the nail plate. Red color lunula and nail plate crumbling. आपको इसमें से ये ध्यान रखना है बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप नेल पिटिंग. नेल पिटिंग. यू हैव अ इमेज. एक बार सब लोग बोर्ड पे देखिए, 2 मिनट रुको, बोर्ड पे देखो. दिस इज योर नेल पिटिंग. This is your leukonychia. Can you see the whitish discoloration of the nail plate? This is red color of lunula. And this is nail plate crumbling. So these are the 4 changes which occurs जब nail matrix affect होता है. And the commonest is nail pitting. Commonest is nail pitting. नेल पिटिंग सबसे कॉमनेस्ट है, वो आपसे एग्जाम में पूछते हैं विच इज द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ऑफ नेल सोराइसिस. चेंज कर दूं? कैन आई चेंज? नेल बेड के होने वाले चेंजेस होते हैं ऑयल ड्रॉप साइन. दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक ऑयल ड्रॉप साइन. आपकी नेल प्लेट पर, इफ दिस इज योर नेल, on your nail plate you will see a red color circle. This is known as oil drop sign, most specific. Then you have onycholysis, when the nail plate separates from the nail bed. And last is subungual hyperkeratosis. ऑलरेडी क्वेश्चंस आपको नेल पिटिंग एंड ऑयल ड्रॉप पे आ चुका है. डन. नाउ कमिंग टू हिस्टोपैथोलॉजी, कुछ क्वेश्चंस आपको हिस्टोपैथोलॉजी से आते हैं. आपको when you do a biopsy you see increase in the thickness of stratum corneum, hyperkeratosis. This is psoriasis का histopathology. Hyperkeratosis, increased thickness of stratum corneum. Then parakeratosis, retention of nucleus in stratum corneum cell. Micromunro abscess. What is micromunro abscess? Neutrophil in stratum corneum.
न्यूट्रोफिल्स इन स्ट्रेटम कॉर्नियम, ऑल दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज, तीनों पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है. पैराकिरेटोसिस इज अ फीचर ऑफ, किसका फीचर है? इट इज अ फीचर ऑफ सोराइसिस. Micromunroapsis, collection of neutrophils in corneum, stratum corneum, feature of psoriasis. आपको एक और कलेक्शन मिलता है psoriasis में, what is it called as? Cogo's micropustule. This is collection of neutrophil in stratum spinosum. Collection of neutrophil in stratum spinosum. And lastly, there is proliferation of rete ridges, which is known as camel foot appearance. So they ask you in exam, where do you see camel foot appearance in dermatology? It is the psoriasis. All of them are important. Camel foot appearance. Clear? Now variants of psoriasis. Can you tell me how many variants we have? We have 6 variant. Can I change the slide? Slide badal dein. First variant, pustular psoriasis. Pustular psoriasis. अगर किसी psoriasis के पेशेंट में प्लाक की जगह पस्ट्यूल्स बन जाए, instead of plaque you have pustules, this is known as pustular psoriasis. If it is localized, एक ही एरिया में है, अगर एक ही एरिया में तो आप बोलोगे localized, एंड अगर ये एक से ज्यादा पार्ट में है बॉडी के, आप बोलोगे generalized pustular psoriasis. क्लियर है? कैन यू सी दी पस्ट्यूल्स हियर? पस्ट्यूल्स दिख रहे हैं आपको? और अगर आपने अभी, अगर आप याद रखो पुराना पेज पे देखो, तो हमने देखा था सोराइसिस में प्लाक थे विथ सिल्वरी स्केल्स, बट यहां पर क्या मिल रहा है? पस्ट्यूल्स. सो दिस इज अ पस्टुलर सोराइसिस पेशेंट. सेकेंड इज इनवर्स सोराइसिस. सोराइसिस एक एक्सटेंसर का डिजीज है, बट यहां पर फ्लेक्चर में होने लगा. इनवर्स psoriasis, also known as flexural psoriasis. एंड प्लीज रिमेंबर ये कैसे डिफरेंट होता है, यहाँ पर स्केल नहीं होते. यू डू नॉट सी एनी स्केल इन दीज पेशेंट्स. You do not see any scale in these patients. Clear है सबको? So three variants which we have read in this slide. Pustular psoriasis where we have pustules, inverse or flexural psoriasis, no scales, and there is one more where you have tent like. आपने कोन देखा है केमिस्ट्री लैब में? कोन फनल. तो जब स्केल कोनिकल हो जाते हैं या फिर टेंट जैसे, टेंट देखे आपने? टेंट, इनको हम बोलते हैं लिम्पिट लाइक स्केल. और ये किस में मिलता है आपको? रूपोइड सोराइसिस में. रूपोइड सोराइसिस में. RUPOID, रूपोइड. अगर एक प्रेग्नेंट पेशेंट जनरलाइज सोराइसिस के साथ आती है, व्हाट विल यू कॉल हर?
impetigo herpetiformis. So unstable psoriasis of pregnancy. Remember this name. Impetigo herpetiformis is not a bacteria, not a virus. It is psoriasis of pregnancy, the severe variety or unstable variety of pregnancy. एक और वेरिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं वॉन जुम्बश डिजीज. वॉन जुम्बश मतलब एक जनरलाइज पस्टुलर सोराइसिस का पेशेंट जिसमें सिस्टमिक अपसेट होने लगा. A patient of generalized pustular psoriasis with systemic upset, you call it as von Jumbush disease. You call it as von Jumbush disease. So generalized pustular psoriasis plus features of systemic upset, this is known as von Jumbush disease. Anybody is confused in this? No? So generalized पूरी बॉडी पे पस्ट्यूल है, फीवर हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, ESR बढ़ा हुआ है, you will call it as von Jumbush disease. There is one more variant which is known as guttate and इस पे आपको ऑलरेडी एग्जाम में FMG में क्वेश्चन आ चुका है. गट्टेट सोराइसिस होता है बच्चों में. इट इज सीन इन चिल्ड्रन. कैसे डिफरेंशिएट होता है ये? इसमें आपको स्मॉल साइज कॉइन शेप्ड लीजन्स मिलते हैं. बॉडी पे छोटे छोटे साइज के पैप्यूल्स या प्लाक्स मिलते हैं. एक्सटेंसर्स पे नहीं होता, ये ट्रंक पे होता है, बॉडी पे होता है. These children will have a history of sore throat or ear infection. You will see sore throat or ear infection. And what is the important trigger here? Please write down. It is due to group A beta hemolytic streptococcus. ये बैक्टीरिया की वजह से होता है सोराइसिस, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ट्रीटमेंट में आप दोगे एंटीबायोटिक्स और HLA-CW6 इसमें बढ़ा हुआ होता है. ऑल ऑफ देम आर एग्जाम क्वेश्चंस. सो गटेट सोराइसिस. और एक लास्ट वैरायटी होती है जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोडर्मिक. और इरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस में क्या होता है? मोर देन 90% ऑफ द बॉडी रेड होती है, स्किन एक्सफोलिएट करने लगती है, और ये होता है बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड विड्रॉवल. सो प्लीज रिमेंबर ये सारे वेरिएंट्स आपको किसी ना किसी तरीके से दे कैन गिव यू क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है. अब एक क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज कोबनर्स फिनोमेना. नेक्स्ट पेज पे जाइए और उस स्पेलिंग को करेक्ट करिए. कैन आई चेंज दिस स्लाइड? एवरीबडी यस और नो? ये दिस इज द फर्स्ट वन ओनली जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना. ये वाला जो सोराइसिस हमने पढ़ा था, दिस वन. ये वैरायटी जो पढ़ी थी ना हमने, दिस सेम वैरायटी, दिस इमेज इज हियर, और इसको क्या बोलते हैं, क्या आप बता सकते हो? दिस इज नोन एज सोराइसिस वल्गैरिस और क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस. सोराइसिस वल्गैरिस जिसमें हमें वेल डिफाइंड पैप्यूल प्लाक मिलते हैं विद सिल्वरी स्केल. क्रॉनिक प्लाक सोराइसिस. डन.
Now next page पे please correct the name. It is Koebner's phenomena. FMG में already question आ चुका है. Now what is Koebner's phenomena? एक बार सब लोग सुनिए सबसे पहले. Everybody first listen. Imagine करो एक psoriasis का patient था और he had a trauma on trunk. Trauma could be post surgical, भाई उसकी कोई सर्जरी हुई या फिर वो he met with an accident and उसको पेट पे कोई इंजरी हो गया. अब you all know that psoriasis is a disease of extensors. उसको पहले extensors पे, elbow पे, knee पे प्लाग था. बट पेशेंट ये ऑब्जर्व करता है कि जैसे ही वो ट्रॉमेटिक स्किन हील हुई उसको उस हील्ड एरिया पर सोराइटिक का प्लाक हो गया. सो व्हेन ट्रॉमा इंड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ आइसोमॉर्फिक लीजन, सेम मॉर्फोलॉजी लीजन्स, you will call it as Koebner's phenomena. Another example, a patient of lichen planus. इमेजिन करो वो ड्राइव करके जा रहा था, गिर गया, कोनी पे उसके चोट लग गई और जैसे ही लीजन हील हुआ उसने देखा यहाँ पर लाइकन प्लेनस के लीजन्स हो गए. दिस इज कोबनर्स फिनोमेना. So they ask you an exam, where do you see Koebner's or isomorphic phenomena? Please remember, two Koebner's is seen in psoriasis, lichen planus and vitiligo. And pseudococcus is a feature of viral infection like viral warts and molluscum contagiosum. Viral wart or molluscum. Trauma induced isomorphic lesions. That is the definition of Koebner's or isomorphic phenomena. Very, very important. Koebner's isomorphic. Already PYQ और already previous years में question आ चुका है. Can you see this image? उसने स्क्रैच करा और लाइन ऑफ स्क्रैच में उसको लीजन हो गया. So that is how you can develop Koebner's phenomena along the lines of trauma. Along the lines of trauma. Now coming to nail changes of lichen. Lichen planus का classical presentation कैसा होता है? What are the 5 P's of lichen planus? याद है आपको 5 P's? Lichen planus के 5 P's होते हैं. We have a polygonal plain topped purple pruritic papule. So very classical clinical presentation. आपको wrist पे lesions मिलते हैं round shape के. They are polygonal. They are like this. Polygonal, plain topped. They are not dome shaped. They are plain topped. Polygonal, plain topped, purple, pruritic, very itchy. अच्छा एक बार और सुनिए. लाइकन प्लेनस वाले पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेन होती है इचिंग. अगर नॉर्मली अपन को इच होता है अपन क्या करते हैं? स्क्रैच करते हैं. यू स्क्रैच लाइक दिस एंड यू फील कंफर्ट. इन लाइकन प्लेनस पेशेंट उनको सिंपल स्क्रैच करने से they do not get that relief. So what they do, they rub. When you rub, just try doing it. When you rub, you are actually rubbing your nails against your skin. And imagine somebody doing this throughout the week, throughout the month. So what will be the commonest nail change in a patient of lichen planus? Thinning of the nail. So the first change which you see in a patient of lichen planus is nail thinning. It is the most common.
और इसी थिनिंग की वजह से क्या हो जाता है, नेल प्लेट की शेप चेंज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं पप टेंट साइन। टेंट की तरह हो जाता है, दी नेल प्लेट बिकम लाइक अ टेंट, सो पप टेंट साइन, यू कैन सी इट हियर, पप टेंट साइन। लाइकन प्लेनस वाले पेशेंट्स में द प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड extend on the nail plate and fuse with nail bed। एक बार सब लोग बोर्ड पे देखिए, दिस इज योर प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड, इट इज एक्सटेंडिंग ऑन द नेल प्लेट and it is fusing with the nail bed. This is known as dorsal pterygium. This is known as dorsal pterygium और ये माना जाता है most specific feature. This is most common and this is most specific. One is most common and another is most specific. Done? Can I change? Change कर दे। अब आप देख सकते हो 5P जो हमने डिस्कस करे, you can see that the papule, it is polygonal, it is not round, it is polygonal, they are flat topped and purple। और अगर हम उसकी सरफेस पे देखेंगे, we will see some white lines, this is known as Wickham striae। एग्जाम में क्वेश्चन आता है what is Wickham striae और where do you see Wickham striae, so it's a feature of lichen planus। लाइकन प्लेनस की कॉमन साइट होती है रिस्ट एंड एंकल। Wrist and ankles are the common site of lichen planus patients. Lichen planus वाले पेशेंट में ओरल कैविटी में कैसे लीजन्स होते हैं? We have white reticulate net like white reticulate oral LP net like white lesions होते हैं। And please write down one of the important trigger is dental amalgam। एक बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था एफएमजी में, a patient who recently had a dental filling done complains of burning while eating food. On examination, we could see some white lines in the oral cavity. What is the diagnosis? So, oral lichen planus, dental amalgam, and when you examine the buccal mucosa, white lacy lines. I want everyone to please write down the histopathology. Turn the page, next page. You get a lot of questions from lichen planus histopathology. In lichen planus patient, there is hyperkeratosis. What was hyperkeratosis? हमने psoriasis में डिस्कस करा था, it is increase in the thickness of stratum corneum, but here there is no parakeratosis, there is no retention of nucleus और उसको हम बोलते हैं ऑर्थोकेरेटोसिस। ऑर्थोकेरेटोसिस, hyperkeratosis without parakeratosis is known as orthokeratosis। stratum granulosum layer thickened है, we will call it as hypergranulosis। एक बार आप लोग सब बोर्ड पे देखिए, जस्ट स्टॉप राइटिंग फॉर अ मिनट। नॉर्मली हमने पढ़ा था डी जंक्शन ऐसा होता है, राइट?
दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज डर्मिस, दिस इज हाइपोडर्मिस. सोराइसिस वाले पेशेंट्स में रीटे रिजे becomes pointed like this, resembling the tooth of the saw. Have you seen saw? आरी बोलते हैं उसको अपन. You see the tooth, they are very sharp, very pointed. तो रीटे रिजेस ऐसे हो जाता है. और एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन आपको बहुत सारे टी लिम्फोसाइट्स कलेक्टेड दिखते हैं. इफ यू गो बैक टू दैट इमेज, देख सकते हैं आप रीटे रिजेस, दे आर वेरी वेरी पॉइंटेड, शार्प. सॉ टूथिंग ऑफ रीटे रिजेस. और नेक्स्ट चीज इज टी लिम्फोसाइट जो बैंड शेप में अरेंज है. बैंड शेप. बैंड क्यों बोला? बिकॉज डी जंक्शन पे पूरे एक बैंड की तरह प्रेजेंट होता है. बैंड शेप टी लिम्फोसाइट. बैंड शेप टी लिम्फोसाइट. स्ट्रेटम बेसेल के जो केराटिनोसाइट्स हैं उनमें एपोप्टोसिस होता है और हम बोलते हैं कोलोइड बॉडी, सीवेट बॉडी and cytoid bodies. What are they? These are apoptotic keratinocyte. ये आपको ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है. एग्जाम में क्वेश्चन था कि which condition presents with colloid bodies on histopath. जैसे ये बॉडी, जैसे ये केराटिनोसाइट्स कंप्लीटली मर जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यू सी एन एम्प्टी स्पेस. और इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं मैक्स जोसेफ स्पेस. You call this empty space as Max Joseph space. Done? Clear? Lastly, just remember this image. Lichen nitidus में आपके FMG में image based question आ चुका है. Skin colored micropapule seen in dorsum of hand or penile shaft. अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी करोगे तो क्या देखोगे कि रीटे रिजेस इलोंगेट होने लग गए. रीटे रिजेस आर elongating and it is giving it an appearance of claw clutching ball. So where do you see claw clutching ball appearance? It is a feature of lichen nitidus. Image based question can be seen from this particular point. Now next पेज पे लिखिए how to approach a question of vesiculobullous disorder. देखो आपके एग्जाम में पेम्फिगस या बुल्लस पेम्फिगॉइड से एक क्वेश्चन जरूर आता है. तो हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेंगे कि whenever you get a question, even if you have not read that chapter, you can solve majority of the questions. So please make a short table or on an empty paper write down approach to a question of vesiculobullous disorder, VBD, vesiculobullous disorder. Now I want everyone, मैं चाहती हूँ पहले आप सुनो then लिखो. Please don't write first, listen to me. अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको दो चीजें हमेशा देते हैं.
या तो वो बोलेगा कि एक पेशेंट था जिसको फ्लैसिड बुल्ला था, या फिर एक पेशेंट था जिसको टेंस बुल्ला था। इनमें से कोई एक चीज वो देगा। फ्लैसिड बुल्ला बोलता है तो आपको इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट के बारे में सोचना है। और इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट मतलब या तो वो पेम्फिगस फोलिएशियस की बात कर रहा है, या वो पेम्फिगस वल्गैरिस की बात कर रहा है। इतना समझ गए? वेरी सिंपल। फ्लैसिड, ओनली थिंक ऑफ टू डीडीज। अगर वो टेंस बोल रहा है, इट मीन्स सब एपिडर्मल स्प्लिट। जो पानी है वो एपिडर्मिस के नीचे भरा है, सब एपिडर्मल स्प्लिट। एंड यू हैव थ्री डिफरेंशियल डायग्नोसिस। यहाँ पे तीन डीडीज आते हैं। बुल्लस पेम्फिगोइड, पेम्फिगोइड जेस्टेशनैलिस, एंड लास्ट वन है आपका लीनियर आईजीए डिजीज। ठीक है, इतना सोचेंगे। सब एपिडर्मल में तीन डीडी, इंट्रा एपिडर्मल में टू डीडी। मान के चलो क्वेश्चन बोलता है फ्लैसिड बुल्ला। अब आपको डिफरेंशिएट करना है फोलिएशियस एंड वल्गैरिस को। उसके लिए आप लोग अगली चीज क्वेश्चन में देखोगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ म्यूकोजा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि म्यूकोजा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज अ पेशेंट ऑफ फोलिएशियस, और अगर वो बोल रहा है कि पेशेंट के म्यूकोजा में लीजन्स हैं, तो ये बन जाता है पेम्फिगस वल्गैरिस का पेशेंट। सिंपल सी चीज, यू कैन इजीली कम टू अ डायग्नोसिस। टेंस बुल्ला में हमेशा एक चीज ध्यान रखो, टेंस बुल्ला में कुछ चीजें कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। वो है कि टेंस बुल्ला हमेशा इच्छी होता है, और एल्डरली में दिखता है अगर बुल्लस पेम्फिकॉइड है, इच्छी होता है और प्रेग्नेंट फीमेल में दिखता है, एंड इची होता है और चिल्ड्रन में दिखता है। सो वन थिंग विच इज कॉमन इज बुल्ला इज इची, पेनफुल नहीं, इची बोलेगा वो। इची बुल्ला इन अ एल्डरली, थिंक ऑफ बुल्लस पेम्फिगोइड। इची बुल्ला इन अ pregnant female, think of pemphigoid gestationalis. And itchy bulla in a child, think of linear IgA disease. लीनियर आईजीए डिजीज वाले पेशेंट में एक और करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इनके बड़े बड़े बुल्लों के चारों तरफ स्मॉल वेसाइकल्स होती हैं। यू हैव एन्यूलर अरेंजमेंट ऑफ वेसाइकल्स, और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर ऑफ ज्वेल अपीयरेंस। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, ऐसा लगता है मोती की माला है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस। ये आप बना लो, दिस इज वेरी हेल्पफुल। Majority of the questions can be solved only by this much. So approach to a question of vesiculobullous disorder. I hope it is visible to everyone. You want me to zoom it? Can I change? Done? Everybody done with this? Those who are done, you can see page number 10 of your workbook. Page number 10 of your workbook. आप वर्कबुक के पेज नंबर 10 पे देखोगे, देर आर टू इमेजेस गिवन एट द टॉप। जो लेफ्ट वाली इमेज है आपके वर्कबुक में, कैन आई चेंज नाउ? दिस इज अ फ्लैसिड बुल्ला। तो अगर आपको कोई इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए, दिस इज अ फ्लैसिड बुल्ला, and this is your tens bulla. Some definitions which you can get. What is a vesicle? Write down: fluid filled lesion of less than 1 centimeter. What is a bulla? Fluid filled lesion of more than 1 centimeter.
What is a crust? See, if a bulla ruptures, the fluid will come out. अगर बुल्ला फूटेगा तो पानी बाहर आएगा, और जब पानी बाहर आएगा तो वो जम जाएगा. You will call it as a crust. It is a dried exudate. जो भी पानी बाहर आया जब वो बॉडी पे ड्राई होगा तो आप उसको बोलोगे क्रस्ट. और अगर बुल्ला है वो रप्चर हुआ और उसका रूफ चला गया, सो व्हाट यू विल सी, क्या बच गया? इरोजन. दैट इज द लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस. तो ये कुछ डेफिनेशंस और हैं जो आपसे पूछी जाती हैं. अब आप एक चार्ट बनाएंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग. आपको एग्जाम में पूछते हैं किस में कैसी इम्यूनोफ्लोरेसेंस दिखती है. पेम्फिगस में कैसी है? बुलस पेम्फिगोइड, लीनियर आईजे डिजीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैन आई चेंज द स्लाइड? इतनी फास्ट? ये भी तो बोला करो कि यस मैम. वो तो फास्ट नहीं आता. नाउ कैन वी चेंज? ओके. सो प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज. एक एम्प्टी पेपर पे लिखिए. आई वांट एवरीवन टू जस्ट राइट डाउन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग. और या फिर आप एम्प्टी स्पेस इधर उधर भी कहीं ढूंढ सकते हैं. यू कैन राइट इट डाउन. You can write it here also. This page is very blank. Just write it somewhere here. Direct immunofluorescent finding. Very important, you get direct questions. Pemphigus vulgaris and Pemphigus foliaceus. In both of them, you get intercellular IgG deposits. और क्या बोलते हैं हम इसको? We call it as fish net appearance. Fish net or chicken wire appearance. In bullous pemphigoid, pemphigoid gestationalis, we get linear deposits of IgG and C3 on basement membrane, and this is known as ribbon candy appearance. In linear IgA disease, it is very similar to bullous pemphigoid, but the only difference is you have linear deposits of IgA. And lastly, dermatitis herpetiformis. They also ask you, you have granular deposits of IgA which are present on dermal papilla. This is known as picket fence appearance. Picket fence appearance. Picket fence appearance because it is irregular. Picket fence क्या होता है? हमने देखा खेतों के चारों तरफ एक कुछ स्ट्रेट प्लैंक्स होते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स होते हैं.
So that straight plank like appearance. वेरी इंपॉर्टेंट, DIF पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. That is histopath. Tombstone appearance is not DIF finding. Don't get confused. That is histopathological appearance. We'll come to that. Done? You get questions on DIF, so you can use this table. नेक्स्ट अगर आप अपनी बुक में देखोगे पेज नंबर 11 पे देयर इज अ साइन नोन एज निकोल्स्की साइन. निकोल्स्की साइन क्या होता है? यू विल गिव अ टेंजेंशियल फोर्स. नॉर्मल स्किन के बॉर्डर्स पे एक टेंजेंशियल फोर्स दोगे तो स्किन सेपरेट हो जाएगी जैसा आपकी इमेज में है. कैन वी चेंज इट? ओके जी. सो निकोल्स्की साइन मीन्स separation of skin on applying the tangential force. Please write down, it is only seen in intraepidermal split. और हमने कौन से पढ़े थे दो? Pemphigus foliaceus and Pemphigus vulgaris. Nikolsky sign occurs only in those blisters where the fluid is inside the epidermis. It is not seen in the disease where the blister is in the dermis or subepidermal. There is one more sign, bulla spread sign. So if this is the bulla and when you apply the pressure from side, from the lateral part, tangential, you call it as bulla spread, and Esbo-Hansen sign, when you apply pressure from the top of the bulla, this is known as Esbo-Hansen. Both were already asked. Bulla spread sign and Esbo-Hansen sign, they are positive in both intraepidermal and subepidermal. It is positive in both intraepidermal and subepidermal. Clear? Clear? Now, histopathology may they ask you, what is row of tombstone appearance? Now, can you tell me pemphigus may the antibody is against what component? Pemphigus may, in pemphigus patients, you have antibody of IgT type and it is against desmoglein 1 and 3. But there is one more glue. You know that hemidesmosome, स्ट्रेटम बेसेल के जो सेल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक और ग्लू की वजह से अटैच है जिसको हम हेमीडेस्मोसोम बोलते हैं. हेमीडेस्मोसोम पेम्फिगस वाले पेशेंट्स में बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसी वजह से हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटम बेसेल के अलावा सारे सेल्स तो एक दूसरे से सेपरेट हो गए बट स्ट्रेटम बेसेल अभी भी कनेक्टेड है और दिस कनेक्टेड स्ट्रेटम बेसेल को हमने बोला रो ऑफ टूम्बस्टोन अपीयरेंस. समझ में आया? सो प्लीज रिमेंबर इन पेम्फिगस vulgaris you see intraepidermal split
and you see row of tombstone. किसकी वजह से था ये? Because of intact hemidesmosome. This was also a previous question. Intact hemidesmosome. They can ask you an exam, row of tombstone appearance is seen in. It's a feature of pemphigus vulgaris. In the next image, you see immunofluorescence. Linear type of immunofluorescence. क्या होना चाहिए इसका आंसर? We have written just now pemphigus vulgaris, bullous pemphigoid gestationalis, and even linear IgA disease. In all three of them, you will see linear IgG deposits. In linear IgA, you will have IgA, and in bullous pemphigoid and pemphigoid gestationalis, you will have IgG. So this is your linear deposits of IgG. Now let me show you the image of, if I have the image of fishnet, just give me a second. I think it is not there in your workbook, but if I have, I can show it to you. How does fishnet appearance look like? So this is your fishnet appearance. This is your fishnet appearance. Linear is straight, fishnet is like a net, pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus. ठीक है? नाउ कमिंग टू एसटीडी. देखो एसटीडी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है पक्का 100%. यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम एसटीडी. एंड एसटीडी में 3 टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या तो जेनाइटल अल्सर से, यूरेथ्रल वेजाइनल डिस्चार्ज से, और या फिर एसटीडी किट से. तो तीनों को रिवाइज करेंगे हम. सबसे पहले जेनाइटल अल्सर्स को कैसे सॉल्व करें. प्लीज राइट डाउन अप्रोच टू अ क्वेश्चन ऑफ जेनाइटल अल्सर. Approach to a question of genital ulcer. Whenever you have a question, अगर आपको कोई जेनाइटल अल्सर का क्वेश्चन मिलता है तो आप 3 स्टेप यूज करोगे. पहला स्टेप आप देखोगे कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है. अगर क्वेश्चन में वो बोलता है कि इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब लेस देन अ वीक, वी विल थिंक ऑफ शैंक्रोइड. अगर वो बोलता है कि लॉन्ग है, मोर देन 1 वीक, it can be syphilis, it can be donovanosis, or it can be LGV. शॉर्ट फॉर्म से लिखिए, पूरा नाम नहीं लिखना. जस्ट राइट S for syphilis, D for donovanosis, and L for LGV. स्टेप नंबर 2, इंक्यूबेशन पीरियड देखने के बाद आप क्वेश्चन में देखोगे लिम्फ नोड का स्टेटस. या तो वो नॉर्मल होंगे, और या फिर दे आर एनलार्ज्ड. एंड इफ दे आर एनलार्ज्ड, whether they are pain less enlarged or they are painfully enlarged. So our second step will be to look for the status of lymph node. Third thing which you will see is morphology of genital ulcer. If you see that the lymph nodes are not enlarged and you have a red exuberant, एक रेड एक्सूबरेंट अल्सर जिसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू है,
जो ब्लीड करता है टच करने पे, यू विल थिंक ऑफ डोनोवानोसिस. You will think of डोनोवानोसिस. डोनोवानोसिस. अगर लिम्फ नोड पेनलेस एनलार्ज्ड है और उसके साथ आपको पेनलेस हार्ड अल्सर मिलता है, यू विल थिंक ऑफ सिफिलिस. और अगर पेनफुल एनलार्जमेंट है लिम्फ नोड का, उसके साथ पेनफुल अल्सर है, you will think of chancroid. And if along with painful lymph node there is no ulcer, think of lymphogranuloma venereum. Lymphogranuloma venereum, LGV. Clear? और छोटा, but it will not be visible to others then. Visible है सबको? Done with the photo? Can I zoom now? This is very important table. If you do the questions, try to use this table. This will make your diagnosis very easy. ट्राई करके देखना, आप जब क्वेश्चंस करेंगे, पहले इंक्यूबेशन पीरियड देखा, फिर लिम्फ नोड देखा और फिर जेनाइटल अल्सर की मॉर्फोलॉजी देखी. ठीक है. नाउ वी हैव सम इमेजेस. चेंज कर दूं? कैन आई चेंज? ओके जी. नाउ क्लिनिकल इमेज. देखो सिफिलिस पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. यू गेट क्लिनिकल क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सिफिलिस. प्लीज रिमेंबर, सिफिलिस में आप एक निमोनिक याद रखो. सिफिलिस को हम सिफिलिस भी बोल सकते हैं, राइट? सिफिलिस, सिफिलिस. सो इट इज अ पेनलेस ulcer and it is associated with painless lymph node. So just remember syphilis, syphilis, painless ulcer and painless lymph nodes. It has button-like consistency. और इस स्टेज को हम बोलेंगे प्राइमरी स्टेज ऑफ सिफिलिस. Hard canker, primary stage of syphilis, hard canker. Remember, they give you question like a truck driver, history of contact with a sex worker, following which he developed hard painless ulcer on the genitals, painless lymph node enlargement. What is the diagnosis? It is syphilis. Also remember, you do a microscopy here which is known as dark field. इस पे भी they have already asked you the question. Dark field microscopy is used to demonstrate treponemas in primary syphilis. ठीक है, डन. Alim, S is syphilis and D is donovanosis, L is lymphogranuloma venereum. Can I change now? Yes. From primary stage, patient goes into secondary stage of syphilis, and what are the lesions?
condyloma lata. Can you see this? Flat moist lesions known as condyloma lata. Flat moist lesion. Flat moist lesions. They develop painless ulcer in the oral cavity, and these are known as mucus patches or snail track ulcer. And they also have hyperpigmented plaque on the palm and sole, which is known as macular syphilid. So please remember these three features. They can give you that in question. Hyperpigmented macule on palm and sole, macular syphilid. After secondary stage, what is the third stage? There is a stage which is known as latent stage. So you can write somewhere below or here latent syphilis. There is no signs and symptom. There is a stage where there is no signs and symptoms, but VDRL is positive. This is known as latent syphilis. And after latent, we have tertiary, which has gamma and involvement of cardiovascular system and central nervous system. This is a patient of aortic aneurysm. So these are some of the features. You can get question on this. Coming to congenital syphilis, please write down Hutchison syphilitic triad. There is a very simple mnemonic, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो. One is related to ear, another to eyes, and another to mouth. Hutchison's teeth. Eighth, nerve deafness and interstitial keratitis. Hutchison teeth, eighth nerve deafness and interstitial keratitis. This is known as Hutchison syphilitic triad. Please remember, in congenital syphilis, there is no primary stage. There is no hard canker. The first clinical feature or the first cutaneous lesion in a patient of congenital syphilis is vesicle and bulla, and this is known as syphilitic pemphigus. And in tertiary syphilis or tertiary stage of congenital syphilis, please remember there is no cardiovascular system involved. There is no involvement of cardiovascular system. Okay? Some of the deformities you can see, saddling of the nose, saddle nose. They can give you this in exam. Where do you see saddle nose? Hutchinson's teeth, Clutton joint.
painful swelling of the joint, and saber tibia, thickening of the anterior part of the tibia. Clear? You can go to the next page. Those who are done, please come to next page. Chancroid. Can I change the slide? पीछे students at the back, can I change? Chancroid, what is the causative agent? Haemophilus ducreyi. And please write down a mnemonic. Haemophilus ducreyi, you can even remember it as Haemophilus ducreyi or dukh raha hai, ducreyi. So in the patients of chancroid, the lesions are very painful, whether it is lymph node or it is the ulcer. So you have painful lymph node and painful ulcer. When we do a gram stain, we see a very classical school of fish appearance. So that is chancroid. School of fish appearance. हम्म तुम बताओ तुम्हें देना एग्जाम किसमें होता है पेनलेस कौन पेनलेस होता है निमोनिक नहीं पढ़ा अभी तो फिर syphilis so that is painless chancroid is very painful as soon as you touch the lesion the patient will cry out of pain so chancroid remember it is very painful ulcer and painful lymph node. Now coming to the next page, granuloma inguinale or donovanosis. You have by mistake the printing of that name on the page here. This granuloma inguinale, it is actually the next one. Granuloma inguinale or donovanosis. What is the causative agent of donovanosis? The causative agent is, you can write it on the last previous page only. It is Caelimetobacteria granulomatis. Caelimetobacteria granulomatis, also known as Klebsiella granulomatis. और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कैसा अल्सर होता है रेड अल्सर exuberant with granulation tissue and it is very fragile. आप टच करोगे and it will start to bleed. Very fragile. If we do जीमसा stain, अगर हमने इनका जीमसा stain करा, we will see some bodies inside the macrophage and these bodies are known as bipolar bodies, safety pin bodies or Donovan bodies. If you see the image, they are like this, oval shaped with pigmentation at the margin. Oval shape with pigmentation at the margin. So giving it an appearance of a safety pin or bipolar appearance. So please remember if you get a question inside the macrophage
Inside the macrophage, there is presence of some bodies with staining at the pole. What is the diagnosis? So this is a donovanosis. Very clear cut image, you cannot get confused. Next is LGV. So you have a space below. Please write down LGV is, I hope everybody is done with this. Can I change? So LGV is lymphogranuloma venereum. What is the causative agent? Chlamydia trachomatis L1, L2, L3. L1, L2, L3. You rarely see an ulcer, no ulcer, only painful lymph nodes are seen and we call them as bubo. So what is bubo? Painful lymph nodes of LGV. और इसी के पास आप लोग एक बॉक्स बना के लिख लो सूडो ब्यूबो. Pseudo bubo. Bubo is a feature of LGV, but pseudo bubo is a feature of donovanosis. Pseudo bubo is a feature of donovanosis. Now I want all of you to please listen to me, everyone. Now as soon as this chlamydia, जैसे ही chlamydia आपकी skin में enter करता है, it immediately go inside lymphatics. And inside the lymphatics, it causes inflammation. So chlamydia ने क्या करा? Lymphangitis करा. I hope you all know that lymphatics drains the extra tissue fluid. And now because lymphatics obstructed hai, this extra tissue fluid will not be drained. So what you will see presence of edema in the genitals. ये जो edema है ये fibroblast को stimulate करेगा to proliferate. And because of that you will see deformity of the genitals. This deformed enlarged genitals known as elephantiatic changes. Female में बोलते हैं isthyomean. You can get this question, very important. And in male it is known as ram rod, ram horn or saxophone penis. You can see that they are edematous and they are deformed. And this occurs because lymphatic जो है वो obstruct हो गया, inflamed हो गया. So this is a feature of LGV. ठीक है जी. So these are the DDs of genital ulcer. अब एक बार हम पढ़ेंगे यूरेथ्राइटिस के बारे में. Done with this? Coming to urethritis, there are two causes. Urethritis के दो causes हैं. Gonococcal and non-gonococcal urethritis. Please write down approach to a question of urethritis. We are talking about STD related urethritis, okay? We are not talking about non-STD urethritis, only the sexually transmitted causes. Gonococcal urethritis, it is mainly due to Neisseria gonorrhea. And how will the patient present? With a short incubation period, profuse discharge per urethra, and when you do a gram stain,
You will see gram negative diplococci. This is very important. Non-gonococcal urethritis is due to Chlamydia trachomatis D2K. The incubation period is more than equals to 2 weeks, scanty urethral discharge, and when you do a gram stain, no organism is seen. That is how you will approach whenever you have a question of urethritis. अगर वो history बोल रहा है कि within 2 days of intercourse, within 4 days of intercourse, it is a patient with short incubation period, think of gonorrhea. If they give you long incubation period, think of non-gonococcal urethritis. So depending upon the cause, we have different type of gonorrhea, urethritis. मेल्स में ही आते हैं सिम्टम्स, फीमेल्स में नहीं आते. यूरेथ्राइटिस डू नॉट अकर्स इन फीमेल्स, इट अकर्स इन मेल. फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स विल हैव एंडोसर्विसाइटिस, दे विल हैव फीचर्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्विक्स, बट यूरेथ्राइटिस इज नॉट सीन इन फीमेल्स because the epithelium of female urethra differs from the male urethra. Female urethra is little resistant for the any sort of infection. So in males you will see these type of clinical feature. Done with this, you can see the image on page number 16 of your workbook. You can see discharge. Can I change? No? Done? Now you can see, I want you to all see this image. This is a patient. Can we extend without a break? How many want break? And how many want me to extend the class? बाकी ब्रेक यार होगा नहीं यार, बहुत फिर भागना पड़ेगा. अरे मेरी दूसरी क्लास है. चलो ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक. 10 मिनट्स में आई विल कम. सो अगर आप होगे तो ठीक है, नहीं होगे तब भी आई स्टार्ट टीचिंग. ओके, सो रन फास्ट बिकॉज आई कैन सी मोर चेयर्स देन स्टूडेंट्स. सो वेयर वी लेफ्ट, आई जस्ट ब्रोक द फ्लो. क्या बताया था लास्ट मैंने? I've told you the difference between the urethritis two types, right? Okay. Okay, please, those who are already in the class, it would be better if you concentrate on the board instead of watching the students coming. We are now discussing the syndromic management of STD or STD kit. देखो, STD kit से you can get a question. We are getting it in NEET PG, we are getting it in INS ET, so FMG is no far. Okay, so you can get a question in your FMG exam also. Now, very quickly, please remember we have total 7 kits for STD. Kit number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Those who are in the class, I would request please don't talk. Concentrate on board. So what is syndromic management? पहले सब लोग बोर्ड पे देखकर समझो syndromic management होता कहाँ है. Everyone, stop writing. Imagine like you are sitting in a tertiary healthcare center. Tertiary healthcare center मतलब multi specialty hospital या फिर एक 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 मेडिकल कॉलेज. Who are you? You are a MD, MS doctor. Now a patient walks in, what will he complain?
He will give you a lot of signs and symptoms. And because you are a qualified doctor, you are a postgraduate doctor, you will think of some differential diagnosis. ऐसा थोड़ी ना है कि पहली बार में ही तुम्हारा डायग्नोसिस आता है. You think of some DDs also. You will ask the patient to go for some investigation. So patient जाएगा, investigation कराएगा और patient वापस से आके तुमसे मिलेगा. On the basis of the reports of the investigation, you will diagnose the patient and you will treat the patient. That's what you do. Yes or no? ऐसा ही करते हो. एक हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है. बट ये हम बात कर रहे हैं टर्शरी केयर सेंटर की, शहरों की. चले जाओ गांव में. इमेजिन अ पीएचसी और एन आंगनवाड़ी. हु इज देयर इन पीएचसी? आशा वर्कर, paramedical staff. You can get MBBS, but that is also they are preparing somewhere for pre-PG. So they will not attend the patients. So the first step of making a diagnosis or differential is not possible at a village level or a PHC level. अगर differential diagnosis नहीं बनाओगे तो investigation भी नहीं बनेंगे. और मान के चलो आशा बहुत होशियार थी, उसने कुछ investigations लिख भी दिए. Do you find labs at a village level? No. So no investigation, no DDs, there will be no diagnosis, no treatment. And because of this, we can lose a lot of patients at a PHC level or a village level. You should know that in India, majority of the population is catered by PHC centers, not CHCs or a multi-specialty hospital. It is catered through a primary health center or a village center. If you do that, you can miss a lot of STD patients at PHC or CHC. So what we are doing now, we don't want to make a diagnosis. We are now treating the patient just by listening to their symptoms. This is known as syndromic management of STD. हमने आशा को बोला कि अगर किसी को डिस्चार्ज है यूरेथ्रा से, ये वाला किट दे दो. अल्सर है, ये किट दे दो. और हमने उसको और सिंप्लीफाइड कर दिया बाय जस्ट गिविंग द कलर्स टू देम. If it is grey color, give it for urethritis. If it is red color, give it for herpetic ulcer. Like that, we have made it easy for them to give treatment. And we are using it. Now we are not missing the cases even at PHC center. हमने STD को 6 kits में divide कर दिया. Kit number 1 was for urethral discharge. Kit number 2 was for vaginal discharge. Kit number 3, 4 and 5, all 3 are for genital ulcer. Kit 6 for pelvic inflammatory disease. And kit 7 is for bubo. What was bubo? Bubo क्या था? Painful enlargement of lymph node. हमने पढ़ा था LGV वाले पेशेंट्स में था. अब बाकी सब तो समझ में आ रहा है. कंफ्यूजन ये है कि 3, 4 एंड 5 तीनों जेनिटल अल्सर में. ये क्या हो गया? हाउ विल आशा डिसाइड किसको कौन सा किट दूं? व्हाट वर द डीडीज वी रेड अंडर जेनिटल अल्सर? क्या पढ़ा था हमने? सिफिलिस, शैंक्रोइड, डोनोवानोसिस एंड एलजीवी. एलजीवी में तो अल्सर था ही नहीं. हम एलजीवी को तो ब्यूबो में ट्रीट कर देंगे. देयर इज वन मोर डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं हर्पीज जेनिटैलिस. अब सुनिएगा, हर्पीज जेनिटैलिस एक बहुत ही नोटोरियस वायरस है. हर्पीज किसी को एक बार हो गया तो वो दोबारा बिना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के हो सकता है. एंड यू कैन सी 10 to 12 episode in a year for herpes without sexual exposure. अब इमेजिन करो कोई ऐसा जेनिटल अल्सर जो बार बार आ रहा है. हमें पता है कि ये हर्पीज है, ये बार बार आएगा, तो हमने उसको एक सेपरेट किट बना दिया. क्यों हम बाकियों की दवाइयां बार बार दें? सो वी हैव मेड अ सेपरेट किट एंड वी हैव गिवन देम kit number 5 which is herpetic genital ulcer. ये समझ में आ गया? अब भी हमारे पास 2 बज गए. We have discussed that we will treat syphilis, chancroid and donovanosis. आप मुझे बता सकते हो syphilis को हम कैसे ठीक करते हैं? We give injection benzathine penicillin
और अगर आपको पता हो पेनिसिलिन देने से पहले वी हैव टू डू अ सेंसिटिविटी टेस्ट, मस्ट होता है वो। अगर कोई पेशेंट एलर्जिक निकल जाए, कैन वी गिव दैट किट नाउ? नो। सो वी हैव टू कीप अ सेपरेट किट फॉर दोज हु आर एलर्जिक टू बेंजाथीन पेनिसिलिन। सो व्हाट वी डिड, हमने किट नंबर 3 कर दिया नॉन हर्पेटिक जेनाइटल अल्सर्स, जिसमें हम पेनिसिलिन दे सकते थे। और किट नंबर 4 को हमने कर दिया नॉन हर्पेटिक जेनाइटल अल्सर, दोज हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन। किट नंबर 1 का कलर हमने रखा ग्रे, किट 2 का रखा हमने ग्रीन, व्हाइट फॉर 3, ब्लू फॉर 4, रेड फॉर 5, येलो फॉर 6 एंड black for 7. You can remember it with the help of a mnemonic. Grey girl wearing bracelet reading yellow book. मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मेल्स में यूरेथ्राइटिस ज्यादा होता है, फीमेल्स में नहीं होता। फीमेल्स में क्या होता है उसकी जगह, you get involvement of the cervix और cervical erosion। so kit number 1 को हम urethral discharge या cervical erosion दोनों में देते हैं। और यही नीट पीजी 2023 का क्वेश्चन था, which kit you give for cervical erosion। ठीक है, सो किट नंबर 1 ग्रे कलर किट वाज द आंसर। देखो सारे बच्चे, यू ऑल आर गिविंग एफएमजी, बट प्लीज डू नीट पीजी एटलीस्ट 5 ईयर का क्वेश्चंस, यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो नीट पीजी का क्वेश्चन पेपर भी लगा के जाना है बिफोर द एग्जाम्स, ठीक है। सो दिस वाज अ रीसेंट 23 नीट का पेपर का क्वेश्चन, सो यू कैन गेट इट अगेन इन योर एग्जाम। डन। सो दीज आर द एसटीडी किट्स। एसटीडी किट में मेडिसिन के नाम पर कौन से किट में कौन सी मेडिसिन है उस पर अभी तक एफएमजी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इनफैक्ट नॉट इन नीट पीजी आईएनएसईटी ऑल्सो, सो वी आर स्किपिंग इट हियर। बट इफ यू फील दैट यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, जब सारे 19 सब्जेक्ट हो जाए, बहुत टाइम बचा हो, देन यू कैन स्पेयर 1 or 2 आवर एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। बट अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, इतना याद रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, डन। चले आगे बढ़े। सो नाउ वी आर मूविंग टू the infections, and the first is fungal infection. Fungal infection again favorite topic of all the exams। फंगल इन्फेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तो सुपरफिशियल से चाहे तो डीप से। फर्स्ट वी आर रीडिंग द सुपरफिशियल फंगस एंड दैट इज डर्मेटोफाइट। डर्मेटोफाइट। एक बार सुन लो, पहले लिखने से पहले सुन लो, डर्मेटोफाइट क्या है। एक ऐसा फंगस है जिसको कीराटिन बहुत पसंद है। दिस इज अ फंगस विच इज अ कीराटोफिलिक फंगस, और ये उसी जगह पे ग्रो करता है जहां केराटिन हो, बिकॉज इट नीड्स केराटिन फॉर इट्स ग्रोथ। हमारी बॉडी पे केराटिन 3 जगह मिलता है, स्किन में, हेयर में, नेल में। सो डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शन आपको सिर्फ इन 3 जगहों पे मिलेंगे, स्किन में भी एपिडर्मिस में, नेल में भी नेल प्लेट में, एंड इन दी हेयर। 3 स्पीशीज होती हैं डर्मेटोफाइट की, कैन यू टेल मी द नेम? ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। एक चीज याद रखिए, मैंने बताया था कि एपिडर्मिस और स्किन, हेयर एंड नेल, दीज आर द 3 एरियाज विच आर अफेक्टेड। ट्राइको के नाम में ही ट्राई है, तो वो तीनों को अफेक्ट करता है। एम एन को अफेक्ट नहीं करता और ई एच को अफेक्ट नहीं करता। मतलब नेल का फंगस कभी भी माइक्रोस्पोरम की वजह से नहीं मिलेगा, बालों का फंगस कभी भी एपिडर्मोफाइटॉन की वजह से नहीं मिलेगा। और जब भी डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन होता है, हम एक प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं, वो है
टीनिया। अगर बालों का डर्मेटोफाइट है, यू कॉल इट एज टीनिया कैपाइटिस. फॉर फेस इट इज टीनिया faciae. In males, if it is on beard area, tinea barbae. On body corporis, groin cruris, manum, nails unguum, and foot tinea pedis. इन सब में से टीनिया कैपाइटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ध्यान हो, आज हमने एलोपेशिया के कॉजेज लिखे थे, याद है? हमने बोला था नॉन स्कारिंग, स्कारिंग, और हमने दोनों में ही टीनिया कैपाइटिस लिखा था. So we now know that tinea capitis is of two types, non-inflammatory and inflammatory. The two non-inflammatory tinea capitis is gray patch tinea and black dot tinea. These are non-inflammatory tinea capitis. ब्लैक डॉट वैरायटी को हम एक और नाम से जानते हैं, एंडोथ्रिक्स, और ग्रे वाले को हम जानते हैं एक्टोथ्रिक्स नाम से. एंडोथ्रिक्स मतलब, एक बार सब बोर्ड पे देखिए, अगर ये बाल है तो यू डेवलप स्पोर्स इनसाइड द हेयर. बालों की शाफ्ट के अंदर फंगल के स्पोर्स मिलते हैं, एंडोथ्रिक्स, और इसकी वजह से बाल बहुत ही कमज़ोर हो जाता है. जैसे ही वो आपके स्किन से बाहर आता है वो टूटने लगता है. दिस गिव यू अ ब्लैक डॉट अपीयरेंस. बाहर आया, आप स्कैल्प पे देखोगे तो टूटे टूटे बाल मिलेंगे. दिस गिव यू अ ब्लैक डॉट अपीयरेंस. And what is ectothrix? If this is your hair, fungal spores are on their surface. तो ये बालों को एक डल ग्रे अपीयरेंस देंगे. So these are the two non-inflammatory type. What are the inflammatory type? Kerion. इस पे आपको already question आ चुका है. Very important. Whenever a patient comes to you with swelling, which is painful, discharging sinuses, बाल चिपके हुए होते हैं, मेटिंग ऑफ द हेयर, दिस इज अ पेशेंट ऑफ कीरियन. यू कैन सी द इमेज, देख सकते हो आप, एक स्वेलिंग है बालों में, स्कारिंग एलोपेशिया है, पस है बहुत सारा, और पस की वजह से बाल चिपके हुए हैं, मेटिंग ऑफ द हेयर. क्लियर? There is one more variety of inflammatory tinea and that is known as favus. Can I change the slide? पीछे everybody at the back? Okay. This is a variety which is known as favus. इस फेवस की एक बहुत क्लासिकल बात है कि इट फॉर्म्स अ येलो कलर कप शेप्ड स्केल, जिसको हमने नाम दिया है स्क्यूटुला. ठीक है. Now coming to subcutaneous mycosis, first one is mycetoma. The classical triad of mycetoma is swelling, discharging sinuses, and you see some crystals coming out of it, grains. Depending upon the color of grain, you have two types, eumycetoma, which is a fungal mycetoma, and actinomycetoma, which is a bacterial mycetoma. So one is fungal, one is bacterial. ठीक है. So mycetoma
प्लीज रिमेंबर द इमेज। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आपको सबक्यूटेनियस माइकोसिस का क्वेश्चन देंगे, दे विल गिव यू अ हिस्ट्री लाइक अ गार्डनर, अ फार्मर, वॉकिंग बेयरफुट, वर्किंग इन द फील्ड। ऐसी हिस्ट्री क्यों दी जाती है? बिकॉज ये जो फंगल स्पीशीज हैं जो सबक्यूटेनियस माइकोसिस करती हैं, दे आर प्रेजेंट मोर इन दी डैम्प सॉइल और डैम्प वुड, गीली मिट्टी में और गीले पेड़ों में। So imagine a gardener was working, he was cutting a tree that was a wet, obviously tree जो होते हैं थोड़े wet होते हैं, because of some trauma the fungus enters the skin, और वो काम कर रहा था, कांटा चुभ गया, there was a thorn and there is a inoculation of fungus in the skin। एक एक गार्डनर था जो नंगे पांव चल रहा था, walking barefoot, there was a wood or a damp soil, trauma in the skin, entry of the fungus. So you will always get such type of history when they will give you question from subcutaneous mycosis. Second is chromoblastomycosis। इसके बारे में आपको एक तो ये याद रखना है कि क्लिनिकली आपको वेरुका ऐसा लगता है कि बड़ा सा कोई मस्सा हो गया है, बट दिस इज नॉट ट्रू वॉट, इट जस्ट गिव यू एन अपीयरेंस लाइक अ वॉट, or it appear like a cauliflower। And the classical histopathological feature is you see brown color bodies, which is known as copper penny, also known as medullary bodies, also known as sclerotic bodies. These one. So from this topic we had a lot of questions in the past, especially in 2022 दोनों FMG में था। So this is a patient of chromoblastomycosis. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्पोरोट्राइकोसिस। स्पोरोट्राइकोसिस की क्या खास बात होती है? स्पोरो, हाँ वो भी होती है बट उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लीनियर होती है हमेशा, और उसको हम बोलते हैं स्पोरोट्राइकोइड स्प्रेड। वो लीनियर इसलिए होती है कि एज सुन एज फंगस एंटर्स द बॉडी, इट enters the lymphatics and it spread through the lymphatics. So please remember sporotrichoid spread। स्पोरोट्राइकोइड स्प्रेड मतलब लीनियर स्प्रेड, लीनियर स्प्रेड which is along the lymphatics। और इनमें अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी करोगे तो आपको स्टार शेप्ड बॉडी मिलती है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बॉडीज। एस्टेरॉइड बॉडीज, you get star shaped bodies which is known as asteroid bodies। ठीक है, अब अपन लिखेंगे वुड्स लैम्प फाइंडिंग। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो वुड्स लैम्प के अंदर अलग अलग कलर के नजर आते हैं। वी रिसेंटली गॉट अ क्वेश्चन इन INICT and in NEET PG we had a question in 2023 paper, so this becomes an important topic। Please write down a heading, woods lamp finding। First is tinea capitis, it appears bluish green। Pityriasis versicolor, it appears, what is erythrasma? Erythrasma is an infection due to Corynebacteria, and this
वेरी क्लासिकली अपीयर्स कोरल रेड। ये अभी रिसेंट आईएनआईसीटी का क्वेश्चन था और नीट में भी था। आईएनआईसीटी में ये क्वेश्चन 2022 में भी था और 23 में भी आया, ठीक है, और उससे पहले वाले नीट में ये क्वेश्चन था। कोरल रेड और कोरल पिंक। थर्ड, विटिलिगो। देखो विटिलिगो कैसा होता है, वाइट होता है, स्किन वाइट हो जाती है। जब आप उनको वुड्स लैम्प में देखते हो तो वो वाइट प्रोमिनेंट हो जाता है, आइवरी वाइट हो जाता है, या फिर मिल्की वाइट हो जाता है, वाइट और वाइट हो जाता है। सूडोमोनास इन्फेक्शन ग्रीन कलर का दिखता है, इट अपीयर्स ग्रीन व्हेन यू सी इट अंडर द वुड्स लैम्प। डन। Now after this we will be reading about cutaneous tuberculosis. तो पहले आप लोग सुनेंगे फिर यू विल राइट। क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, लूपस वल्गैरिस, स्क्रोफुलोडर्मा, ट्यूबरकुलोसिस वेरुकाक्यूटिस, टीबी कैंकर। अब सिंपल सी बात है, एक बैक्टीरिया तो एक ही तरीके का इन्फेक्शन होना चाहिए, क्यों हमें अलग अलग मॉर्फोलॉजी के लीजन मिलते हैं? इससे एक चीज तो क्लियर होती है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉर्फोलॉजी डिसाइड करने में रोल प्ले करते हैं। इफ माइकोबैक्टीरियम टीबी infect the skin, there should be some factors which decides the morphology, और वो फैक्टर्स होते हैं साइट ऑफ एंट्री ऑफ एमटीबी, बाहर से आया कि अंदर से आया, बाहर से नहीं, दोनों तरीके से आता है। एक्सोजिनस मीन्स इमेजिन यू आर वॉकिंग barefoot एंड यू accidentally stepped on the sputum of टीबी पेशेंट। आप चल रहे थे, किसी ने थूका हुआ था और आपने पाँव दे दिया, ऑलरेडी यू हैड अ एबरेशन, एमटीबी गेन्ड द एंट्री। सेकेंड, यू आर वर्किंग इन लेबोरेटरी, आप स्पूटम सैंपल पे काम कर रहे थे, बातें करते करते अचानक आपकी उंगली पे प्रिक हो गई, एमटीबी फ्रॉम दैट सैंपल एंटर्ड योर स्किन। एंड थर्ड इज ओपन एयर डिफिकेशन, सुबह सुबह अंधेरे में, पता नहीं था हम कहाँ बैठे हैं और आपसे पहले कोई अपना काम करके जा चुका था। यू सेट देयर वाज अ शार्प प्लांट trauma to your buttock and maybe somebody with TB of GI tract, entry of MTB into your skin. So these are the three ways a MTB can enter your skin. Second is exogenous. What do you mean by endogenous? Sorry, what is endogenous? अंदर से अंदर मतलब नहीं, उससे कुछ नहीं होता। इमेजिन अ पेशेंट ऑफ लंग टीबी, ऐसा नहीं होता, दे swallow, बेचारे दिन भर थोड़ा थूकते रहेंगे, दे डू swallow, आपके गैस्ट्रिक एसिडिटी से एमटीबी डाई। नाउ लिसन टू मी हाउ दे स्प्रेड। एक पेशेंट था पल्मोनरी टीबी का, टीबी में बड़ा सा कैविटी कर दिया उन्होंने और वो कैविटी रप्चर हो गई, कैविटी रप्चर हुई, थोड़ी सी ब्लड वेसल एक्सपोज हुई, एमटीबी घुस गया ब्लड में, फ्रॉम ब्लड इट रीच्ड योर स्किन, दिस इज नोन एज एंडोजिनस। टीबी ऑफ अ lymph node, it busted on the skin, it caused infiltration of skin. टीबी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, इट ascended, वो सारे एरिया को इन्वॉल्व करते करते ascended and it causes periorificial TB. So these are the endogenous modes of tuberculosis. We have three main types which you need to know. One is lupus vulgaris. This usually spread through endogenous route and it occurs in a patient with good CMI. देखो आप सब लोगों को BCG वैक्सीनेशन बचपन में लगा होगा, राइट? So our immunity knows that there is a bacteria MTB. We have already formed some memory T cells.
Now, whenever we get the MTB again, our body will respond very quickly. It will not allow the MTB to multiply in numbers. But imagine a patient who is maybe who was born, brought up in USA on NRI quota, took admission here. He went, he took microbiology also, and there is an accidental trauma in the finger. His immunity had never seen MTB in the past. By the time immunity will make something, the MTB will multiply. Okay? For us, those who already got BCG vaccination, we usually get paucibacillary type. Paucibacillary means the number of AFB or MTB, they are less in the amount. Number is less. Lupus vulgaris clinical feature is annular plaque with scarring. And if you press with a glass slide, you will see apple jelly nodule. Second is tuberculosis verruca cutis. This is also known as anatomist wart because it is mainly through the exogenous route. कई बार anatomist fresh body को dissect करते हैं and imagine he don't know that this patient was already a patient of pulmonary TB. He was dissecting the lungs and there was a trauma to the skin. He develops what is known as tuberculosis verruca cutis. Clinical feature is you get a verrucous lesion, rough thickened lesion. This is also paucibacillary type. Paucibacillary means the immunity of the patient is good. Then he develops, either TBVC or he develops lupus vulgaris. TBVC is the short form. We have one more tuberculosis and that is scrofuloderma. Scrofuloderma occurs when there is endogenous spread from the lymph node to the overlying skin. The common side is neck. Can I change this slide? Overlying skin of an infected lymph node. Common site is neck. You have endogenous spread. And please remember, scrofuloderma occurs in a patient with poor immunity. So you have multibacillary type. स्क्रोफुलोडर्मा उनमें ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी पहली बार एनकाउंटर कर रही है, जिनकी इम्यूनिटी पुअर है, उन लोगों में स्क्रोफुलोडर्मा ज़्यादा होता है. देखो ये इम्यूनिटी पुअर का मतलब दे आर नॉट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, नो, दे हैव नॉर्मल इम्यूनिटी बट दी टीबी स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज पुअर, CMI इज पुअर, नॉट द जनरल इम्यूनिटी. ठीक है. There are three hypersensitivity reactions, tuberculids. Please write down. Tuberculid or hypersensitivity reaction. क्या नाम होता है? Can you help me with that? What are the names of tuberculids? Erythema induratum, papulonecrotic TB, and lichen scrofulozorum. देखो एक चीज ध्यान रखो, ये तीनों हम पढ़ रहे हैं टीबी वाले चैप्टर में, बट दे आर नॉट ट्रू स्किन टीबी. They are not
ट्रू स्किन ट्यूबरकुलोसिस, किसी एक पेशेंट को लंग टीबी था एंड उन पेशेंट्स में आपको कुछ क्यूटेनियस फीचर्स दिखते हैं ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दैट इज नोन एज ट्यूबरकुलेट. इफ यू टेक बायोप्सी आपको एसिड फास्ट बैसिलाई नहीं मिलेगा बिकॉज दे आर नॉट ट्रू ट्यूबरकुलोसिस, दे आर जस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस टू टीबी फोकस समवेयर एल्स, या तो लंग में होगा या जीआई ट्रैक में होगा. रिमेंबर दीज थ्री नेम्स, they are not tuberculosis, they are tuberculid, hypersensitivity reaction secondary to TB of internal organs. Now coming to human papilloma virus infection, HPV infection. Students online, they're asking drug of choice. Please remember drug of choice for any cutaneous TB. It is ATT. You give same protocols, 2 months of intensive, 4 months of continuation, 4 drugs to begin with, 3 drugs to end. Same protocol for cutaneous TB. Nothing is different. Okay? So cutaneous TB is treated like a patient of pulmonary tuberculosis. कमिंग टू व्हाट्स, अब देखो आपको वायरल इन्फेक्शन में वो स्ट्रेन पूछते हैं कौन सा एचपीवी कौन सा इन्फेक्शन करता है. सो कॉमन वॉट ऑल्सो नोन एज वेरुका वल्गैरिस, ये होता है HPV 2 and 5 की वजह से. प्लेना इज प्लेन वॉट, वेरुका प्लेना. Veruca plana is the plain wart and this occurs due to HPV 3 and 10. वल्गैरिस और वेरुका प्लेना में क्या डिफरेंस है? वल्गैरिस तो रफ होता है ऐसे और प्लेना स्मूथ होता है. सो वेरुका प्लेना, वेरुका वल्गैरिस. नेक्स्ट पेज पे दिया है आपको प्लांटर वॉट. प्लांटर वॉट होता है बिकॉज ऑफ HPV 1 और ये दो दो तरीके का होता है. दिस इज ऑफ टू टाइप, मोजाइक वेराइटी एंड मिरमेसिया. सो HPV 1 मोजाइक एंड मिरमेसिया टाइप. नाउ कमिंग टू फिलीफॉर्म और डिजिटेट वॉट. डिजिटेट वॉट ऐसा लगता है कि कुछ उंगली जैसे प्रोजेक्शंस लाइक योर फिंगर, सम प्रोजेक्शंस आर कमिंग आउट. The strain of HPV causing digitate wart is HPV 2, similar to that of common wart. Finger-like projections. Finger-like projections. On the next page, genital wart. Can you tell me another name for genital wart? Condyloma acuminata. इस पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं आपको. This is condyloma acuminata. It occurs due to HPV 6 and 11 and please remember they are low risk. They never cause malignancy. They never cause cervical cancers or any cancer. Now I want you to add here only molluscum contagiosum. If you have any space at the lower part of this page or at the back page, also remember about molluscum. They ask you about molluscum contagiosum also. What is molluscum contagiosum? It is a pox virus. Clinical feature of molluscum contagiosum is you develop
dome shaped umbilical papule. There is a depression in the center. So dome shaped with a depression in the center. And when you do a histopathology, you will see Henderson Peterson body. Henderson Peterson body. So dome shaped, small, discrete dome shaped lesions. Now let me show you the image. Just wait for a minute. I will show you the image which is not there in your workbook, but let me see if I have it with me somewhere. So can you see this image? They are discrete, they are small, they are dome shaped, and there is a depression in their center. This is your molluscum contagiosum. Okay, so sometimes they give you question on that also. And one more infection which I want you to add because I'm seeing questions on that, hand, foot, and mouth disease. Hand, foot, and mouth disease. As the name suggests, in these patients on hand, on oral cavity, and on foot, even on buttock, you get angulated vesicles. जो vesicles है वो इसमें ऐसे होती है, they are not round, they are angulated vesicle. Causative agent is Coxsackie A16. Now can you tell me what is HHV3 microbiology हुआ आपका? What is human herpes virus 3? Varicella zoster virus. What does this virus cause? Chicken pox. Now what happens, just listen to it, you don't have to write. Chicken pox occurs when you are infected with that virus for the first time. Now this virus, it remains dormant. Where? Dorsal nerve root ganglia. And whenever the patient's immunity goes down, it comes down through that nerve, and what does it cause? Herpes zoster shingles. You see grouped vesicles in a single dermatome. So ये भी याद रखो that HHV3 causes varicella zoster. It is varicella zoster virus. First episode is varicella, and reactivation causes herpes zoster. Herpes zoster is a grouped lesion in a single dermatome. What is the main problem with herpes zoster? Pain. It is a very painful condition. Post-herpetic neuralgia is the most common complication. So these are the viral infections you can get in your exam. Coming to these three images and these three names. Nevus of Ota, Nevus of Ito, and Mongolian spot. Nevus of Ota is bluish discoloration of face unilaterally. Ito is bluish discoloration on scapular region, and Mongolian spot is lumbosacral region. All three of them occurs due to premature arrest of melanocytes in dermis. So they give you direct question image based. Melanocytes, they are actually neural crest derivative. They are not derived from ectoderm. So they migrate during the embryogenesis, and sometimes that migration is defective. They get arrested in the dermis, giving rise to these three types. Clear?
Now coming to some of the nutritional deficiencies which are frequently asked in your exam. Can you tell me what is the first image on page number 22? It is an image of phrynoderma. And where do you see phrynoderma? It is mainly due to vitamin A deficiency, can also be seen because of essential fatty acid deficiency. So please write down. आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है फ्राइनोडर्मा पे, also known as toad skin, and this occurs due to vitamin A deficiency. What do you get in eyes of a patient of vitamin A deficiency? It is known as xerophthalmia. ठीक है, so we already got a question. ऑफ्थेल में आपको बताएंगे xerophthalmia. There is dryness of cornea conjunctiva, bitot spot. What is this? Where do you see Kessel's necklace? It is vitamin B3 deficiency. What are the other features? We have 4Ds: diarrhea, dementia, dermatitis, and if you do not treat this patient, death. Diarrhea, dementia, dermatitis, and death. Who gets vitamin B3 deficiency? Alcoholics, malabsorption syndrome, maize and jawar eaters. Why they get? Because maize is a deficient crop in tryptophan, and tryptophan is a precursor of niacin. Why people eating jawar gets it? बिकॉज जवार में आइसोल्यूसिन होता है जो ट्रिप्टोफेन का एब्जॉर्प्शन नहीं करने देता. सो रिमेंबर, मेज एंड जवार ईटर. लेट मी राइट इट हियर. एल्कोहलिक में मिलती है माल एब्जॉर्प्शन. मेज और जवार ईटर्स, एंड इवन इन कार्सिनोइड सिंड्रोम, क्योंकि कार्सिनोइड में ट्रिप्टोफेन डाइवर्ट हो जाता है सेरोटोनिन बनाने के लिए, और बहुत ही कम ट्रिप्टोफेन बचता है नायासिन बनाने के लिए. सो प्लीज रिमेंबर, ट्रिप्टोफेन which is a precursor, it should be in sufficient quantity, otherwise you will get vitamin B3 deficiency. And what is there in the last image? Cheilitis, angular stomatitis, glossitis, vitamin B2, riboflavin, riboflavin deficiency. Can you tell me one thing? What is acrodermatitis entropathica? So if you have space anywhere, just write down. Can I change this slide? This is riboflavin. Riboflavin. Riboflavin causes cheilitis. Riboflavin causes cheilitis. Can you see lip is inflamed, cracked? Clear? And what is the last name which I have told you? Acrodermatitis. Acrodermatitis enteropathica. It is congenital zinc deficiency. What is the classical triad? DAD, diarrhea, alopecia, and periorificial dermatitis. You will see lesions around the mouth and around the anus. Periorificial dermatitis. This is acrodermatitis enteropathica. Clear है? Done?
Now the next image on page number 22, what is this? Malignant melanoma. लास्ट वाला कर लिया था सबने जिंक वाला. यू वांट मी टू पुट दैट स्लाइड अगेन? Acrodermatitis enteropathica. Can I change it now? So come to page number 22, lower part, malignant melanoma. Please remember it is of four type: superficial spreading, lentigo maligna, acral and nodular. The most common variety is superficial spreading. Malignant melanoma always occurs in a benign pigmentary condition or pigmentary lesion. And when do you say that this benign lesion is converting into malignant? What is that criteria called as? So imagine there was a benign lesion like this. This pigmentary lesion was present since many years. But patient recently observed that one side of this lesion is increasing now. Lesion has become asymmetrical. The borders are becoming rough. Color is now variable or irregular, and diameter is increasing. So this is known as ABCDE criteria for suspecting the malignant conversion in a benign lesion. Clear? ABCDE criteria for ABCDE भी है. E is evolution. Suddenly all these changes occur. Sudden evolution. ABCDE criteria. These changes are occurring suddenly. 10 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, but अचानक 2 महीने से. So this अचानक, sudden evolution is E. There is another skin malignancy which they ask you in your exam, and that is basal cell carcinoma. BCC पे जब भी क्वेश्चन आया है, सिंपल इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया है. They have never gone deep into this. So you just have to remember this image. What is this image? पेज नंबर 23 की इमेज को क्या बोलोगे? Rodent ulcer. Can I change this page? At the back पीछे. This is a patient of. It is the most common skin cancer. It is locally aggressive. It do not metastatize. The common site is on face. If you draw an imaginary line from angle of mouth to the tragus, BCC occurs above this line. Angle of mouth to tragus, BCC occurs above it. You develop what is known as, first it starts with a nodule and soon it ulcerate. You develop a ulcer with pearly beaded everted borders, and this is known as rodent ulcer. Known as rodent ulcer.
Done. Acanthosis nigricans, ये नीट पीजी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. Whenever you develop a velvety hyperpigmentation on the body fold, neck, axilla, groin, this is known as acanthosis nigricans. It is of two types, benign variety and malignant. Benign variety occurs in young individuals with metabolic syndrome. What is mean by metabolic syndromes? Obesity, hyperlipidemia, diabetes, PCOD, they all are metabolic syndromes. So if a young individual comes to you with the features of metabolic syndrome and pigmentation on the body fold, this is acanthosis nigricans. The malignant variety usually occurs in elderly and it is associated with gastric adenocarcinoma, adeno-CA. Adenocarcinoma. What does the next image shows? A very classical target lesion. And can you tell me what is this condition? This is your erythema multiforme. Erythema multiforme. It is due to viral infection, herpes simplex virus, which is a more common cause, or it could be because of drugs. So erythema multiforme could be because of virus, could be because of drug, but viral infection is more common. How does a target lesion appear? There are three zones: dusky center, middle zone of edema, and the outermost zone of erythema. This is known as a target lesion. Three zones. You call it as target lesion. It is also known as bullseye. It is also known as iris. Also known as bullseye, also known as iris. Okay? And the last image which you have here is, can you tell me what is the next image given on your workbook? It is a severe drug reaction which is known as Steven Johnson and toxic epidermal necrolysis. Can I change the slide? Everybody at the back, done? Next is your SJS N10. Now please look or understand, in Steven Johnson, in Steven Johnson syndrome and in toxic epidermal necrolysis, which are the severe drug reactions, they develop what is known as target-like lesion. In target-like lesion, we have only two zones: dusky center and erythema at the periphery. Which zone is missing? The second zone of edema is missing.
In SJS, the body surface area is more than 10%, less than 10%. If you see target lesions in less than 10%, you call it as SJS, and in 10, when the BSA is more than 30% involved. In both of them, mucosa more than two sites, oral genital, oral nasal, oral ocular. So mucosa involvement is always seen. Done. Now few topics we will be discussing along with the MCQs. So we have attached 5 years ka PYQs at the back. Please come to question number 1. I think this was a recent question and a lot of students got confused. Done with this? Now please come to the first question. For understanding first question, you have to understand something called as acantholysis. Now एक बार सब लोग सुनो. What do you mean by acantholysis? Acantholysis का मतलब होता है कि keratinocytes separate हो गए. Please try to understand. We are talking about the keratinocytes which are the cells of epidermis. Now इसको समझाने से पहले let us understand a simple example. ये टेबल है. अगर मैं बोलूं कि आपको ये टेबल को डिसमेंटल करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो. आप लोग स्क्रू लाओगे and you will just remove the attached screws and you will dismantle the table. दूसरा तरीका है आप एक हथौड़ा ले आए and you start it beating up. This wood will break and then also you can dismantle the table. दोनों तरीके से आपने टेबल को डिसमेंटल कर दिया. कीरेटिनोसाइट को सेपरेट करने के भी दो तरीके होते हैं. या तो आप उनके बीच के ग्लू को हटा दो, डेस्मोसोम को डैमेज कर दो, कीरेटिनोसाइट सेपरेट हो गए. और दूसरा तरीका आपने कीरेटिनोसाइट की वॉल को तोड़ दिया, तब भी कीरेटिनोसाइट सेपरेट हो गए. अब एक कीरेटिनोसाइट ऐसे अटैच था और आपने बीच के ग्लू को हटा दिया तो क्या होगा? सारे इंटैक्ट सेल आपको सेपरेटेड दिखेंगे, पूरे पूरे इंटैक्ट सेल सेपरेटेड दिखेंगे. दिस इज नोन एज प्राइमरी एक्एंथोलाइसिस और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्एंथोलाइटिक सेल. ये हमें अभी लिखो नहीं, अभी सुनो, ये हमें दिखता है पेम्फिगस वाले पेशेंट्स में. बट देयर इज अनदर कंडीशन विच इज नोन एज सेकेंडरी एक्एंथोलाइसिस, जिसमें कीरेटिनोसाइट का सेपरेशन कीरेटिनोसाइट की वॉल के टूटने की वजह से हो रहा था. अब कीरेटिनोसाइट्स की वॉल टूट गई एंड द न्यूक्लियस दे गॉट कलेक्टेड. दिस large area with collected nucleus, this is known as multinucleated giant cell. And this is a feature of secondary acantholysis. And this is seen in viral blister. This is seen in viral blister. इतना समझ में आया सबको? So we have two type of acantholysis, primary and secondary. अब एक बार वापस से बोर्ड पे देखिएगा. Let me show you both the images together. Just give me a second. ये है आपका acantholytic cell and this is your multinucleated giant cell. पहली इमेज में आप देख सकते हो कि सारा सेल एक दूसरे से सेपरेटेड है, बट इधर आप देखो कि साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया और सेल एक दूसरे से जुड़ गए. अब ये जो फीचर होता है सेकेंडरी एक्एंथोलाइसिस का, ये हर्पीज वायरस का कैरेक्टरिस्टिक है. और अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, इमेज शोज अ multinucleated giant cell. Which of the following virus do not show multinucleated giant cell? इसका आंसर था
HIV virus. ठीक है? So if you want to write this, you can write. Done. Can I change the slide now? Now can you solve question number 2? हमने इसका cutaneous image already देख लिया. This is a patient of vitamin A deficiency and this is your Bitot spot और इसको आप बोलते हो xerophthalmia. So because we have one image there, I have not kept the image of eye in that part because it is here. ठीक है, तो हमने ऐसे बनाया कि कुछ questions वहाँ हैं, कुछ questions यहाँ हैं. Next, question number 3. Syphilis. Remember the mnemonic syphilis, painless ulcer. Why gram stain? भाई डार्क फील्ड होगा ना, पेनलेस अल्सर बोल रहा है ना वो. ग्राम स्टेन होगा शैंक्रोइड के लिए विच विल बी पेनफुल. डू क्राई. हेमोफिलस डू क्राई को हमने डू क्राई भी पढ़ा था. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नंबर 2, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी. फोर्थ इमेज, अ रेड कलर लीजन with silvery white scale. This is a patient of psoriasis. क्वेश्चन में उन्होंने ये वर्ड भी एंटर कर दिया है और इसीलिए हमने वो टेबल बनाई थी पूरी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स, बिकॉज यू डू गेट क्वेश्चंस लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ हियर आई वांट टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. देयर आर 3 DDs of vaginal discharge. What are the 3 DDs? Can you tell me? We have bacterial vaginosis, we have trichomoniasis and candidiasis. What is the clinical feature of bacterial vaginosis? Profuse white discharge with foul smell. The pH of vagina increases to more than 4.5. Less acidic हो जाता है. और अगर यहाँ पे आप माइक्रोस्कोपी करोगे तो यू विल सी clue cell. Very important. What are clue cells? These are vaginal cells studded with bacteria on its surface. Yes. So profuse white discharge, foul smell, pH of more than 4.5 and clue cells. These are the features of bacterial vaginosis. For trichomoniasis, you have a greenish, frothy discharge. There is cervical inflammation. And what do you call as? This is known as strawberry cervix. If you do microscopy, you will see trophozoite, pear-shaped trophozoite मिलते हैं. आपको माइक्रो में पढ़ाएंगे. This is a very important structure. You have an undulating membrane also sometimes. So trophozoite is a feature of
trichomoniasis. In Candida, you will have curdy white associated with intense itch. And if you do a microscopy, you will see pseudo hyphae or budding yeast. Pseudo hyphae or budding yeast. So these are the common differences which you should know. Which STD kit you will give for vaginal discharge? Green, V of vaginal discharge and V of 2. So kit number 2, which is green color. Okay. So what will be the answer of question number 5 now? The answer is trichomoniasis. Now can you identify the image in question number 6? They are comedones. We have two type of comedones and how they are formed we have already discussed. The answer is acne comedone. Identify this lesion. Next question. You can see a purple flat papule with lacy pattern in the oral mucosa. This is a patient of lichen planus. Remember I told you 5 P's of lichen planus. An oral cavity has some white lacy lesions, reticulate lesions, lichen planus. If they are writing truck driver, do not think of anything other than STD. And remember macular syphilid, एक picture बताई थी मैंने first वाली. This is a very classical macular syphilid. Hyperpigmented erythematous lesions on palm and sole. This is a patient of secondary syphilis. This is a patient of, you can see the lesions on the photo exposed area. Vitamin B3. This is your Castle's necklace. In vitamin B3, we develop photodermatitis only on the exposed part. So can you see wherever the undergarment was there, there is no eczema. So this is a patient of vitamin B3 or niacin deficiency. Next, painful blisters along a dermatome, herpes zoster, and this is due to human herpes virus 3. Question number 11. Kobnus phenomena is seen in all except, what are those viruses which show pseudocobnus? Molluscum and viral wart, that is HPV infection. Herpes will never show Kobnus phenomena. Okay? Next question. Small sized lesions on the trunk. What type of psoriasis? We have read 6 to 7 types, right? This is a patient of guttate psoriasis. Pustular में pustules मिलेंगे, erythroderma में पूरी body red होगी, inverse में flexures involve होंगे. This is a patient of guttate psoriasis. Okay. Then next, you can see that the part is swollen. Can you see some sinuses? This is a very characteristic feature, swelling sinus, and they can also mention about the grain. This is a patient of mycetoma. ट्यूबरकुलोसिस वेरुका क्यूटिस कैसा होगा? हमने फोटो देखी थी ना, वेरुकस कॉलीफ्लावर लाइक. क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस भी वैसा ही होगा, थिकन्ड. And cellulitis will be flat. You will see a diffuse redness in cellulitis. This is a clear-cut example of mycetoma. What is neurofibromatosis? दो जीनोडर्मेटोसिस आपको आने चाहिए. Let me show you that.
I think I have the images of that. न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक बार देख लो बोर्ड पे. ये टाइप 1 न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होता है जिसमें स्किन लीजन मिलते हैं. व्हाट आर द क्यूटेनियस लीजन? यू हैव न्यूरोफाइब्रोमास, कैफे ओले मैक्यूल, iris leash nodule and axillary freckling. एक्सिलरी फ्रैकलिंग मतलब आपको छोटे छोटे से ब्लैक मैक्यूल्स होंगे. ये एक्सिला की जगह दूसरी जगह भी हो सकते हैं जैसे कि ग्रोइन और नेक, एंड दैट इज व्हाई नाउअडेज वी कॉल इट एज क्रो साइन. प्लीज रिमेंबर न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1, it is an autosomal dominant disease, and this occurs due to chromosome 17 defect. Which is the pathognomic lesion? Axillary freckling is pathognomic. It is not cafe au lait macule. It is axillary freckling which is very, very characteristic of neurofibroma. There is one more genodermatosis which you can get in your exam. Can I change this? Just write down the name and skin lesions. You do not get deeper questions. The next xenodermatosis is tuberous sclerosis. What is tuberous sclerosis? Presents like there is a very classical triad of epiloia. This is known as Vogel's triad. Patient will have epilepsy, loss of intelligence, and adenoma sebaceum. What is adenoma sebaceum? Small keratotic lesions on the face. Other than this, you will have ash leaf spot, depigmented lens-like lesions on the skin, shagreen patch, a connective tissue hematoma on the back, which is shagreen patch, and third is Conan's tumor on the nail fold. You have small thickening. Just remember these names. Like neurofibromatosis, this is also autosomal dominant, and it is also known as Bone-Villei disease. It is known as Bone-Villei disease. There is one more genodermatosis, उस पे शायद क्वेश्चन मैंने दे रखा है इसमें. Yes, we have that question, so we will do when that question will come. Done with this too? Those who are done, please come to page number, question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ. किस डिजीज में हमने न्यूट्रोफिल का कलेक्शन पढ़ा था एपिडर्मिस में? फोलेशियस कहां से आ गया? वल्गैरिस कहां से आ गया? सोराइसिस में नहीं पढ़ा था? माइक्रोमोन मैंने कहा बताया पेम्फिगस में न्यूट्रोफिल के बारे में? Did I anywhere mention about neutrophils in pemphigus group of disorder? No. Collection of neutrophil in the epidermis अगर याद हो तो micromundo abscess, Kogo's micropustule, they are very classical feature of psoriasis. Don't do that mistake. So the answer of this question is psoriasis. Neutrophils are present on histopathology, very very classical of psoriasis. और क्वेश्चन बोल रहा है स्केली स्किन, तो ये पेम्फिगस कैसे होगा? भाई पेम्फिगस में वो बोलेगा ना वेसाइकल्स एंड बुल्लस ऑन द स्किन, नॉट स्केली स्किन. So this is psoriasis. Answer this question number 16. Why this is not green? Although option नहीं है, but अगर दिया होता तो very nice. Abdominal pain.
Lower abdominal pain means it is a patient of pelvic inflammatory disease. So yellow. Gray किस में देते हैं? Urethral discharge. Red, herpetic genital ulcer. Black, bubo. Bubo. Number 17, diarrhea dermatitis. Maze eater. Everything points towards pellagra. In which deficiency you get beriberi? B1, thiamine. Now, question number 18 आप करोगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी इसमें. What is the answer? देखो, अगर इमेज नहीं भी समझ में आ रही तो ऑप्शंस पढ़ो. एक ही ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है. Wickham's try, sawtoothing and civet body, they are features of lichen planus, but micromundo abscess is a feature of psoriasis. हमने सारी चीजें पढ़ रखी है ऑलरेडी अभी. So this question, when this question came, students ने बोला ये इमेज तो हमने देखा ही नहीं है. They left the question. But please read the options. Sometimes just reading the options can also give you correct answer. 13 cis retinoic acid किसका नाम था? Isotretinoin, and one of the side effect is teratogenicity. Now this is a very interesting question. This is a question from allergic contact dermatitis. पार्थेनियम. अब आप लिखिए कुछ एलर्जेंस के नाम which causes allergic contact dermatitis. सीमेंट. क्या होता है सीमेंट में एलर्जन? कौन सा होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और they can even give you chromium. हेयर डाई. नीट पीजी में हेयर डाई पे क्वेश्चन था. पैराफिनाइलिन डायमीन. बिंदी adhesive PTBP. It is para-tertiary butyl phenol. Para-tertiary butyl phenol. Nickel. So these are some of the common allergen. Perfume, furocumarin. Furocumarin in perfume. And in parthenium, sesquiterpine lactone. That causes irritant contact dermatitis, not allergic. जो डिटर्जेंट से होता है आपको, दैट इज इरिटेंट, नॉट एलर्जिक. ठीक है. So in this question, I think the answer is very easy for you. The answer is option number 1. They just want you to identify the plant. What is next question? Pityriasis versicolor. What was the color of Pityriasis versicolor under the Woods lamp?
Can I change the slide? Hypopigmented macule on the upper trunk, spaghetti and meatball. This is your pityriasis versicolor. Pityriasis versicolor. And the causative agent is Malassezia furfur and Malassezia globosa. Furfur and globosa. Can you solve question number 22? What is the diagnosis in question number 22? Question shows some image. Can you see these lesions? They are erythematous plaque with silvery scale. If you remember, when we were discussing the site, I told you lower back is the common site. So erythematous plaque with silvery scale, this is a patient of psoriasis. In 5% of psoriasis patient, you develop arthritic changes. These patients are known as psoriatic arthritis patients. And for psoriatic arthritis, the drug of choice is methotrexate. Now we have to write what are the different drug of choice depending upon the different types. Please write down. Please write down what are the different variants for psoriasis vulgaris. Drug of choice is methotrexate. For gutted psoriasis, antibiotics. For erythrodermic, again psoriatic arthritis also methotrexate. Psoriatic arthritis. Drug of choice. For pustular psoriasis, acetretin. What is impetigo or petiformis? Please remember in impetigo or petiformis, drug of choice is oral steroids. So they sometimes ask you depending upon the variant which are the drug of choice in psoriasis patients. Depending upon the variant which is the drug of choice. Next question number 23, you know the answer. Instead of asking you the diagnosis here, they are asking you the cause. So it is niacin or tryptophan which is a precursor. Those who are done with the writing part, question number 23 is very easy. We already know the answer. It is tryptophan. Can I change? The answer here is question number 24. Which malignancy, which cutaneous TB occurs on the neck?
It is the, what is this? Is the patient of acrodermatitis enteropathica. Acrodermatitis enteropathica. Now, can we revise all the nutrition deficiency? Vitamin A deficiency, what does it cause? Vitamin A deficiency, what does it cause? It causes dryness of skin or phrinoderma. Vitamin B1 deficiency, what does it cause? It causes beriberi. Beriberi do not have any cutaneous feature. So vitamin B1 deficiency do not present with cutaneous feature. What is vitamin B2? Riboflavin. What does it cause? The dryness of lips or cheilitis, angular stomatitis. Vitamin B3. What is vitamin B3? Niacin. What does niacin deficiency cause? It causes pellagra, diarrhea, dermatitis, dementia, death. What are the causes of vitamin B3 deficiency? Maize eater, jawar, alcoholic and malabsorption syndrome, carcinoid syndrome. What is the congenital zinc deficiency called as? It is known as acrodermatitis enteropathica. What is the triad of acrodermatitis enteropathica? DAD, diarrhea, alopecia and dermatitis. Where do you see dermatitis of acrodermatitis enteropathica? Periorificial. So please remember, these nutritional deficiencies can be asked in your exam. You should be very well versed with this. Okay? Chalo. You can see the image of periorificial dermatitis here, around the mouth, around the anus. Next question. This is your comedone. I told you the answer. I told you the answer. For grade 1, you give keratolytic drug, topical retinoid. So answer here is this. एक बार एक सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था जिसमें उन्होंने दिया था टॉपिकल ट्रेटिनोइन. एक बार और रिपीट हुआ था जब उन्होंने दिया था टॉपिकल कीरेटोलाइटिक ड्रग. सो डिफरेंट ईयर सेम क्वेश्चन विथ लिटिल बिट चेंज इन दी ऑप्शंस. व्हाट इज दिस? अ पेशेंट विथ पिगमेंटेड. अब देखो, the answer is malignant melanoma, but how to differentiate it with BCC? BCC में nodule होना जरूरी है. Nodulo-ulcerative. This is not a nodulo-ulcerative lesion. This is a flat lesion. So this is your malignant melanoma. This is your malignant melanoma. What is this? This is an infectious condition. Now this is an infection. Now this is a very, actually this image is very nice. It is because of photographic effect. This image shows you what is known as million ear sign. In your microbiology, you will be taught about a condition which is known as erysipelas. सुना है आपने? Erysipelas. Erysipelas is very similar to cellulitis. The only difference is erysipelas, because here you have dermal edema and inflammation, it is well defined. While cellulitis, you have subcutaneous edema or inflammation, so it is ill-defined. It is difficult for us to examine it on the face. So what you do, you look for the involvement of the ears. Please remember, in our ear pinna, there is no subcutaneous tissue. So you will never see cellulitis in your ear pinna. And that is why if you see inflammation of the ear along with the face, this becomes a patient of erysipelas. Understood the difference? And erysipelas, what will be the answer? Streptococcus. Clear? Streptococcus. What is the answer of next question? Everybody done with the last part?
Yeah, this is a pure image based question. Remember, this is known as cutaneous horn. And cutaneous horn is a pre-malignant condition which causes squamous cell carcinoma. What is the next image? This is the image of condyloma acuminata. Now let us revise the HPV infection again. Everybody ready? Now starting with, yes sir. Now starting with Verruca vulgaris. Everyone, Verruca vulgaris, which HPV causes it? HPV 2 and 5, Verruca vulgaris. Verruca plena, which HPV causes it? 3 and 10. Plantar what? 1. And genital what? HPV 6 and 11. So you get this question frequently, so you should know everything, all these HPVs very on your tips. Where do you see condyloma lata? Secondary syphilis. Now this is a question from neutrophilic dermatosis. So just make a small note on a separate paper. Neutrophilic dermatosis. What do you mean by neutrophilic dermatosis? You have collection of neutrophils. You have collection of neutrophils in the skin. We have three types. One is known as pyoderma gangrenosum. Another one is known as Behcet's disease. And third one is known as sweet syndrome. In pyoderma, in all of them you will see associated inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease. In pyoderma gangrenosum, the clinical feature is ulcers, painful, rapidly progressing ulcers. In Behcet's disease, features uveitis in the eyes, arthritis, and orogenital aphthous ulcer. And in sweet syndrome, you will get fever plus painful nodules. So just remember this image, nothing more is required. So what will be the answer? You can see a patient of ulcerative colitis. I told you, you will have a background of inflammatory bowel disease present with ulcer on the leg. This is a patient of pyoderma gangrenosum. If they say that patient presents to you with painful nodules and fever, sweet syndrome, and if they give you orogenital ulcers, joint disease, eye disease, it is Behcet's disease. Okay? Question number 32. What is question number 32? Now this is a question from Impetigo. Please write down superficial bacterial infection, Impetigo. It is of two types, bullous and non-bullous. Two type, bullous and non-bullous. Bullous impetigo will have flaccid bulla, while non-bullous impetigo will have yellow color or honey colored crust. In bullous, there is no complication, but in non-bullous, one of the common complication is PSGN, post streptococcal glomerulonephritis.
So the answer of question number 32 is option number 1. क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कोई बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 33 is from a topic frostbite. Now everybody listen to me. Whenever you go in a very cooler environment, body will preserve the heat. तो अगर आप बाहर जाओगे तो आप भी तो ठंडे हो सकते हो ना, but you have to maintain your core body temperature at 37 degrees centigrade. And how does the body maintain that? It reduces the blood flow by vasoconstricting. अब imagine the areas which are supplied by a single end artery. If that artery is blocked for some time, the area which is supplied by this artery, वहाँ पे hypoxia हो जाएगा, और hypoxia होने की वजह से you will have buildup of oxygen, reactive oxygen species. These reactive oxygens in presence of hypoxia will start causing damage and pain. This is known as frostbite. Now what should be your treatment? आपको पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि भाई आप उसको वार्म एनवायरनमेंट में ले आओ, बट कई बार वार्म एनवायरनमेंट पे लाने पे भी ब्लड वेसल डायलेट नहीं होती. सो द नेक्स्ट थिंग इज यू विल first give something which cause dilatation of the blood vessel, and second you increase the oxygen level of the blood. So vasodilatation is done by pentoxifylline. Hyperbaric oxygen means you are giving more oxygen, and why you are giving aspirin? You don't want that area to get blocked, so you need some platelet plug inhibitors. You need to give some drugs which inhibits the platelet plug formation. But what is phenylephrine? This is a vasoconstricting drug which will actually worsen up this condition. Okay? So you will never give a vasoconstrictive drug in a patient with frostbite. Question number 34. This is a very classical question of xeroderma pigmentosa. This is the last dermatosis which you should know. Neurofibromatosis, tuberous sclerosis and xeroderma pigmentosa. Xeroderma pigmentosa. Now this is a nucleotide excision रिपेयर डिफेक्ट. एक बार सब लोग सुनिए, आपकी बॉडी में सनरेज से बहुत हार्म होता है, स्पेशली केराटिनोसाइट्स में. कई बार ज्यादा देर सन के अंदर रहने से हमारा जो केराटिनोसाइट का न्यूक्लियस है उसमें कुछ डैमेजेस हो जाते हैं. हमारी बॉडी में इन डैमेजेस से बचने के लिए कुछ रिपेरेटिव मैकेनिज्म्स होते हैं, बट अगर किसी पेशेंट्स में ये रिपेरेटिव मैकेनिज्म्स खराब हो जाए तो डीएनए डैमेज होता रहेगा, और अल्टीमेटली वो लोग जीनोडर्मेटोसिस और ऐसी बीमारियों के साथ प्रेजेंट करेंगे. वन ऑफ देम इज जीरोडर्मा पिगमेंटोसा. They have all the features of sun damage: freckle, ulceration, skin malignancy, scarring. And what is problem here? In them, the nucleotide excision repair process, जो डैमेज को रिपेयर करने वाला जो प्रोसेस है वो मिसिंग है. ठीक है, सो क्लिनिकल फीचर्स लिख लीजिए. You will have freckle, increased skin tumors or malignancy, scarring, etc. Scarring. Question number 35, you know the answer. I told you, you see angular vesicles. So if you see, the vesicles are not round, they are angular. They are angular. Okay, they are not round, they are angular. Done with this question? Everyone? The answer of this question is
Coxsackie A16. Image number 36 shows dew drop on rose petal appearance. And this is a question of chickenpox. प्लियोमॉर्फिक क्यों बोलते हैं चिकन पॉक्स की रैश को? क्योंकि नहीं, दैट इज पॉलीमॉर्फिक. प्लियोमॉर्फिक मीन स्टेज. पहले मैक्यूल आएगा, फिर पैप्यूल आएगा, फिर वेसाइकल, पस्ट्यूल एंड देन स्कार. So with this we are done with dermatology. चलो, अच्छा, थैंक यू. ओके, 5 more minutes. Few students were asking me about leprosy. देखो leprosy से बहुत questions देखे नहीं मैंने, but just I'm giving you a brief overview of if you get a question from leprosy, how to differentiate different types of leprosy. We have TT, BT, tuberculoid, borderline, borderline lepromatous and lepromatous leprosy. Please remember, in your tuberculoid end, the cell-mediated immunity is very strong. And as we go from TT pole to LL pole, immunity reduces. Obviously, अगर immunity ज़्यादा है तो acid fast bacilli बहुत कम होगा, और जैसे जैसे immunity घटेगा acid fast bacilli का नंबर बढ़ता जाएगा. In tuberculoid pole, clinical lesion is you have a very localized, well-defined plaque. But as you move from TT to LL, the size of the plaque or the number of the plaque increases. In BT, you develop satellite lesion. In BB, you have multiple punched out or Swiss cheese lesions. Because they are punched out from the center. They are multiple, but they are bilaterally asymmetrical. They are more on one side of the body. In BB, in BL and LL, in both of them you will see bilaterally symmetrical multiple lesions. Multiple and symmetrical. So patient of TT will have a localized disease, LL will have a diffuse disease, and when you go from TT to LL, the lesion increases slowly. That is the main concept of leprosy. You can get clinical based question if you get, but I don't think leprosy is not been asked in FMG. But if you get, just look for a well defined plaque. Nerve damage is maximum towards the TT pole, and as you move from TT to BT, BB, BL, nerve damage keeps on reducing. So if you see a well-defined plaque with loss of sensation, it is a TT pole. And if you see a diffuse lesion without nerve damage, it is the lepromatous pole. Clear? So try to do MCQs. If you have any issue with the MCQs, you can ask me. My Telegram and my Instagram IDs I'll give you. You can drop the message, any question which you are not able to understand. This is my Instagram ID, Dr. Cheshta Agarwal, and in Telegram, Dermatology by Dr. Cheshta. You can also tag me on the Telegram group of DAMs if you are there. Just tag me if you have any doubt. You can just ask me over there also. ठीक है जी? So all the best and good day.